चलने दे, हमको बाहर बुला लिया हमको। हम क्या करें अभी, हम यहाँ देखेंगे वहाँ बाहर जाएं। बाहर जाए क्या? हमको लगा आपको हाँ सर, फेसबुक सही है, यूट्यूब भी लाइव है सर, देखिए एक बार प्लीज़ कीजिए। ठीक है सर, ओके, चलिए ठीक है, ओके ओके, सी यू। Good morning and a warm welcome to all the dignitaries, eminent speakers, directors, sir, fellow colleagues, and my dear students in Marketing Conclave 2022 at ISM Patna. The theme for today's conclave is Green Marketing from Indian Perspective. We marketeers, or as future professionals, should not treat it just like a term. It should be our way of leading our life as well as showing the path to others like our competitors, our customers, the potential customers and other human beings of how to live in this planet. As till now, we only know of one planet which can sustain life. So now I would request Sujit sir to play the glimpses of ISM.
was the glimpses of ISM. Now I would request all the guests and director sir to please come on the dais. Now I would request director sir to welcome all the eminent personalities with floral bouquet. First, director sir to Shri Sailendra Kumar. Director sir to Amarnath Pandey sir. Director sir to Shri Mohit Kumar. Director sir to Shri Sarbada Shankar Lal sir. Director sir to Dr. P.K. Agarwal sir. And director sir to Ms. Prema Gupta, Senior GCI. Now I would request director sir to felicitate the eminent speakers. First, director sir to Shri Sailendra Kumar. Director sir to Dr. Amarnath Pandey sir. Director sir to Shri Mohit Kumar sir. Director sir to Shri Sarbada Shankar Lal sir. Director sir to Dr. P.K. Agarwal sir. Director sir to Ms. Prema Gupta, Senior GCI. Now I would request Nayan sir to felicitate our director sir.
to do the lamp lighting and floral tribute. उठाइएगा, ऊपर ऊपर उठाइएगा, ऊपर उठाना लैंप लाइटिंग दिखाने के लिए। अरे नहीं जाती नहीं Thank you, sir, ma'am. Now, I would request our dignitaries and Soumya Shukla ma'am jointly. I would request all the dignitaries to please launch the marketing management book. I wish all the best to Nayan Ranjan and Soumya Shukla. Now, I would request Nayan Ranjan Sinha sir to please ठीक है। give the welcome address. शिव A very warm and green good morning to
to all the dignitaries of the dais, different colleagues, and my dearest students. Mary Davis rightly said that to walk into nature is to witness thousands of miracles. So we decided to continue with the Marketing Conclave 2022 with the theme Green Marketing with Indian Perspective. I, Nandanjan Sinha, co-convener of this Marketing Conclave 2022, would like to welcome, first of all, Sailendra sir, as he spared his time in his very busy schedule. He is renowned corporator as well as academician. I am fortunate enough to welcome Sailendra sir, and I also feel very proud because I worked more than a decade with Sailendra sir. I am grateful to Dr. Amarnath Pandey sir, who is looking after all the activities of Nalanda Open University apart from their busy schedule. He is impressive, and thank you sir, and welcoming you on our Marketing Conclave 2022. I would like to welcome Sri Mohit Kumar Singh sir, Channel Head Eureka Forbes, for accepting our invitation and sharing the dais. I feel very honored to welcome Sri Sarvada Shankar Lal sir, a young, dynamic and role model for the society. He is heading more than 4 companies. P.K. Agarwal sir, Professor and Head, PG Department, PG College, Patliputra University, for accepting our invitation and extending always your support to R.K. Singh sir, 2022. I welcome Administrator ISM Patna, Ms. Neeru Kumari Jha ma'am, for unconditional support and needful directions to make this event more smooth functioning. I welcome members of Marketing Department, different domain leaders, faculty colleagues, teaching and non-teaching staff, technical support team, media person, and my dearest student to enjoy Marketing Conclave 2022 at the auditorium of ISM Patna. The Government of India launched an Eco-Mark scheme in 1991 to increase consumer awareness. In respect to environment-friendly products, the aim of the scheme is to encourage always to purchase these products which have less harmful environmental impact. Some examples of the companies are being successfully reducing the production of improving the profit by conducting green marketing like Wipro, Infosys, Tata Metallic Limited, Maruti, Delhi CNG, Suzlon Energy employ environmental products and to endorsement of the eco certifications. From these trustworthy and these themes, we would continue with this Marketing Conclave 2022. Live green, love green, think green. I also would like to welcome Ms. Prerna Gupta ma'am, CTO NCC, for sparing her valuable time with us in Marketing Conclave 2022. Thank you very much, all of you. Thank you, sir, for the welcome address. Now, faculty and trainer to please grace this occasion and give his inputs on green marketing initiative. I would just like to say a few words about sir. Sir has got around 31 plus years of experience in sales, service, commercial aspects of paints, consumer durables, and many other sectors. Sir have also handled effectively different channel partners for ensuring effective marketing and distribution of products. Currently, Sir is teaching students in different educational institutions like AIM College, Magad Mahila College, and others. So now I would request Sir to just spare a few knowledge words with us. Very good morning to you all. So, can you hear me? Yes, sir. Okay, right.
over here. I'm really thankful to Dr. R.K. Singh, Director of this institution. I'd like to talk Mr. Amarnath Pandit, Mr. Mohit Kumar, Sarvadhan Sankarlal, and P.K. Agarwal. Colleagues, teaching faculties of this management institute, my younger brother like Nayan Ranjan, who called me a day that, sir, I want you to take this session. I said, okay, fine. There will be no problem, absolutely, I'll be coming. And it is really nice. I'm very nice to see this young generation over here who are going to change the world in a very short period of time. Okay, friends, the topic is global warming. See, green marketing, sorry. Now, green marketing because of the global warming. The global warming, when we talked about that, we understood that it is really harming the world as a whole. I'll just give you some pictures. The instrumental temperature record shows the signal of rising temperature emerged in the tropical ocean about 1950. Today, uses the extra information captured in the proxy record to trace the start of the warming back a full 120 years to the 1830s. In 1896, a seminar paper by Swedish scientist Savante Abenes first predicted that changes in atmospheric carbon dioxide level could substantially alter the surface temperature through the greenhouse effect. Guy Calendar connected carbon dioxide increases in Earth's atmosphere to global warming. Now, this global warming basically became the cause for today what we are talking about green marketing, as the subject has come before us that we should talk about. I'll talk a little more about that. Global warming has resulted in climate change. Climate change is the long-term alteration in Earth's climate and weather patterns. It took nearly a century of research and data to convince the vast majority of the scientific community that human activity could alter the climate of our entire planet. So that was very important, because what happened after the Industrial Revolution? Every country went for industrialization without understanding the consequences of that. They have not cared about the earth, what is going to happen with that, the planets, is it going to be in our favor? All that has been there. So that is what we are going. The current global warming temperature average across land and ocean 2020 surface temperature was 0.98 degrees Celsius, warmer than the 20th century average of 13.9 degrees centigrade and 1.19 degrees centigrade, warmer than the pre-industrial period 1880 to 1900. What we can understand that the early onset of warming can be attributed to the initial rise in greenhouse gases caused by the industrial revolution. That is what I was talking to you. The turning point in our climate was probably also influenced by recovery from massive volcanic eruptions in 1815, which caused the infamous year and impacted the agriculture sector also. The 5 areas of global warming were greenhouse gas are the main reason. First, greenhouse gases were emerged out from different plants and also they were the major cause. Second was with the variation in the sun intensity. Now, sun's intensity has also changed because of the global warming and the use of different greenhouse gases. There was a depletion in the ozone layer, and because of that, we were getting direct sun rays in our planet. So it was really causing a great problem. Then industrial activity, as I told you, that industrial activity went haphazard. They have not cared about anything. They thought they have got a big
chicken, that chick which used to give golden eggs. So for that reason they have gone for. But they have not realized that what crime they are making by not caring for other areas. Then agricultural activity also, we have used too much of chemicals, fertilizers, and that way we are making the land barren. Then deforestation was another reason of global warming. Then Earth's own feedback loop was also one of the reasons. Then climate change impact of global warming that will affect us. What are the area which is going to be affected by global warming? That also we should understand. Damage to your home, more expensive home insurance, outdoor work could become unbearable. See, in the March itself, we are having a temperature of 38. It is being predicted that our temperature is going to be 40 plus in March itself. So working outside will be difficult. So naturally, most of the activity is not going to take place. Okay. Then other areas, higher electrical bills and more blackout. Higher electrical bills because you are going to use maximum of AC and all. So your electricity bill is going to go up. Food will be more expensive. It has already started becoming expensive and it is going to be more. Now the kind of war we are finding there in Ukraine and all, it is going to add further problem to our neighbor. Water quality could suffer and ice melt. Water quality you are using nowadays on RO invariably. So because of that water quality and ice melting, you must could have heard that glaciers they are losing their place. So naturally it is also going to give a great problem to us. Then outdoor exercise, recreational sports will become more difficult. So this kind of thought and all, it is not going to be possible, and disruption in travel will also be there. So these are the outcome of global warming. Now, not only that, it has impacted our management world also. We started talking about green marketing. Now, when we talk about green marketing from Indian perspective, I believe that it is not only Indian perspective, it's a global perspective. Everybody is concerned about that. Every country is concerned. You cannot say that India should. Yes, India is taking initiative towards that or not to control it. We are doing great jobs, I tell you. So many initiatives have been taken by the government. I remember I used to work in Voltas way back in 91, 92. That time, government has given incentives, to all the refrigerator manufacturers, AC manufacturers, to convert their production process from using that dichloromethane to carbon-free gases, which is known as practically R12 gases. So for that, they have given incentives and all. And so today, most of the companies have adopted that it works. So I will give you little more glimpses of that. Global warming and climate change primarily gave birth to the concept of green marketing. Various international agencies started issuing guidelines to contain global warming for the larger interest of the humanity. The industrialization done blindly after the Industrial Revolution, ignoring its negative impact in the environment has been marked as the main reason for global warming. As such, this was felt by the world to take initiative to curb the situation and make the world a better place for the humanity as a whole. Green marketing is one component of a broader movement towards socially and environmentally conscious business practices. Increasingly, consumers have come to expect companies to demonstrate their commitment to improving their operation almost various environmental, social, and governance criteria. To that end, many companies will distribute social impact statements on an ongoing basis in which they periodically self-report on their progress towards these goals. So naturally we are doing that.
Every company, if you buy a product today, it writes there, we care for our earth. So it is a green product. We have not used anything like that which will be affecting adversely to the earth or will add to the global warming problem. So that is what we are doing also. Then further to it, there are many incentives for the companies that choose to engage in green marketing. To begin with, the companies' perceived commitment to environmental causes is an increasingly important factor influencing many consumers' spending habits. The 2014 Nelson Global Survey on Corporate Responsibility, if we take example, found that roughly 55% of consumers were willing to accept higher price from companies deemed to have positive social environmental impact. Now you see that consumers have also become aware. Today, if you want to fool a customer, you are going to, do a great mistake or some harm for your own company. Consumers are well learned, they know what exactly they require to buy, and they also understand the importance of saving the earth. So for that reason, though the product coming with green market tag, green product tag, are little costlier, but people are still ready to pay for it, those who are very much concerned for the environment. Okay, all over the world, consumers are now cognizant regarding the fortification of the environment in which they live. So the consumers they say, fortify this. Don't allow any company or any product to come into the market which is going to impact us adversely. That's very important to understand. What happens? Normally, our habits were very different earlier. But now, what we have done, we have changed. You see the Ganga cleaning and so many things, so many initiatives have been taken and we are contributing in that. And once we are contributing in that, what we are doing, we are really improving our environment and where we are not talking only today about ourselves, we are talking about the future generation, what we are going to leave for them. That is also going to be one area. Most of the consumers believe that environment-friendly products are safer to use. They are at present showing eager interest in everything that is organic, such as organic food, hybrid cars, carpooling. So the organic food has become even a fashion today, I think. Not only that. So if it goes with organic tag, the same vegetable which you are buying, say suppose as 40 rupees kg, with organic tag you can sell it for 80 rupees a kg. So we will have to be little careful about that as a consumer while buying that whether really it is organic or not. That's very important to understand. Because it can happen. In market, variety of people are there, we know what they can do. But of course, organic products are available now. Now this, I told you that agriculture also got affected by global, the kind of job we were doing. Now people are shifting towards organic farming. So many people, greenhouse and organic farming are there, and from there the product naturally will be costly, so people are buying that. Recycled product, energy saving appliances, etc. Now energy saving appliances. You see this lamp, compact fluorescent lamps, CFLs. Earlier we used to have incandescent lamp. We had different kind of vapor lights that used to create not many problems. Heating as well as emitting gases, carbons. So it has been converted thanks to GE, General Electric Company, which came for the first time in compact fluorescent lamp. And they have given this idea. Now, today what we are doing? We are having a cool light. At the same time, we are saving electricity bill also. And that electricity consumption has been reduced. So the kind of power generation we have, with that we are saying that we are 100% catering the need of Indian consumers. That means if you would have been in the old system,
you would have required more plants for power generation, which we now don't require. So that means there also we have control to a great extent, because having a power plant will create carbon emission and all. You can see the power plants which run with coal. Okay. As a consequence, there is a swing in practice of marketers has helped that has given birth to the concept think green. Right now, Nehru was also saying about think green. Yes, think green. And this led to the appearance of green marketing, which is fixed for mounting market for sustainable and socially accountable products and services. It contains a wide range of tasks such as product adjustment, transforming the production process, change, advertising, and modification in packaging, etc. Now, this is very important area to a marketing student, to a student of management. You should know about what is product adjustment. As it is, when we say that when we want to go for international business, product can be modified for the serving the need of that country's customer. Like if India wants a car to be imported from America, Americans will have the driving seat in the left side. In our country, we have it right. So if they want to sell to Indians, they will have to shift their steering to the right side. Similarly, there are various products which can be modified that. Similarly, I told you about Voltas has gone for changing the production process. That is what is also being taken care of. Governments were ready to give incentives. They have been earmarked. Even world agencies were also giving to money to different governments so that they can ask their industry to completely change the process of manufacturing, or a manufacturing process which is eco-friendly, right? Then we have advertising also is required to be changed. Now advertising cannot be taught only from the product perspective. It has to talk about the green marketing perspective also, that how the product which will be used by the customer is not going to adversely impact the environment. And this kind of initiative aims at reducing the harmful impact of product, their consumption and disposal of on the environment. Despite of this world awareness, there are numerous potential challenges, issues that are required to be surmounted. Now, it is not that if you will go, there will be no challenge. Yes, the moment we say green marketing, there are challenges before us. And what are those challenges? Let us talk something about that. What we should understand that resource is scarce. It has been told to you all right from the day one you joined the management class. Okay, that we have scarce. Resource is always scarce. So since resources are limited and human wants are unlimited, it is important for the marketers to utilize the resource efficiently without achieving the organizations, sorry, without achieving the organization's objective. Today's consumers are becoming more and more rational about the environmental and are also becoming socially responsible. Now, socially responsible, even a guy, small guy, takes the paper and goes and puts it into the dustbin. So he's socially responsible. And we are teaching lesson to our generations also, that look, you will have to change your habits and all. So that is what rational about the environment, and are also becoming socially responsible. Therefore, all companies are attentive towards the consumer's aspiration. All companies. Yes, to talk about any company today, your institution is talking about green marketing. Why? Because we want the generation to know about this. That what is green marketing, how it is going to impact negatively us if we don't care for the earth and all. So this is what everywhere it is happening. So companies are taking that care. There is a growing awareness among consumers worldwide regarding protection of the environment in which they live. People do want to bestow a clean earth to their dependents. I told you the dependents or those descendants will come. They will get a better life. What we are going to live, it is normal habit, biased behavior, or you can say human behavior.
Human behavior is what? We collect so many things, make it a deposit. For what you asked them, for what you are having this much of money. No, my generation will enjoy it. So this way also you can give your generation a better life if you are really having a proper understanding about the ecological system. Various studies by environmentalists indicate that people are concerned about the environment and are changing their behavior. Just now I told you about changing the behavior pattern so as to be less hostile towards it. Green marketing is becoming increasingly important due to the following reasons. Number one, opportunities. There are various opportunities. I'll just tell you, business firms perceive green marketing to be an opportunity. So that means tomorrow if you're going to work, don't feel problem because your company itself is understanding it. That can be used to achieve their objectives. For example, Xerox introduced high quality recycled photocopy paper, copy and paper in order to satisfy the demand from less environmentally harmful products. Similarly, what I told you about Voltas using carbon-free gas in place of dichloromethane. हटाओ उसको लगाओ 8 that is what was there and you see any refrigerator they will write a sticker will be there we use green gas so that is where it is helping the society so it is an opportunity before the organization to market it in that way because they know the consumers are well aware they are having rationality towards their own ecosystem so they don't want to destroy it. They are understanding the importance of global warming, it is how it is going to harm them. So every company has to take care about it. If companies will not take care of this, those who will not take care, I tell you, they will not be surviving for a long period. Then after that, it is a social responsibility also for the organization. Organization gets money from where? From the common people where they sell their product. So that has to be given back to them. And at the time of giving back, what we are doing? We are giving you global warming. So we are not doing good for the society. So what is there? It is our responsibility, the organization's responsibility to ensure that the ecological system does not get disturbed. And for that reason, they have to adopt or change the process. If they don't have changed their own production process and making more initiatives, they will have to take. Many firms are beginning to realize that as member of the wider community, they must behave in an environmentally responsible fashion. Therefore, environmental issues are being integrated into the firm's corporate culture. It has been integrated. Now, if you go to a plant, you will find lot many trees they are giving and so many things they are doing. That is the initiative they are taking. And I told you that when I work for a firm, I gave you an example of that. There is another firm, called Mysore Lab Works Limited. That was the government of Karnataka where I used to work. So that company also changed from the traditional lamp and tubes to the present system of lighting. So everywhere initiatives were taken to control this. This is what we can say the social responsibility. Now beside this too that there is opportunity, we have our social responsibility. Another pressure is there from government side that is called government pressure. Government has to make legal regulations to contain this kind of problem. So government agencies are creating more and more regulations to control hazardous waste produced by industry. कभी दिल्ली गए हो आपने? जमुना नदी को देखा? ये क्या चीज है? What is that? That is basically hazardous chemicals and all left over by the industry in the river directly. So that is the reason why Jamuna has become a Nala, not a river. But what we are going to do with this Ganga, we are having plans and all.
variety of things will come at a place where it will be cleaned, and then those water will be released to the Ganga river. That is how it happens. So this is government's regulations are required. Governments are taking initiative in this regard. Even for private industries, they are giving incentive to put their water treatment plant in their factory, so that the wastewater which they used to send directly to the river, now first it will be treated and then it will be released to the river. So waste producing industries, those regulations seek to protect consumers and the society from negative impact of business activities on the environment. In some cases, governments try to induce firms and individuals to become more responsible towards the environment. अभी बहुत सारी चीज हुई ना हमारे यहाँ, बाहर में कुछ भी फेंक दो तो पकड़ लेंगे, you will be penalized. Okay, this kind of initiative government has to take. In the train, if you smoke, you are fined by 1,000 rupees, maybe even jail. So these initiatives, all the things has to be done by the government. Now the fourth area that organization gets is competitive advantage. Yes, your competitor does not have product to say that we are having a green product. There you have advantage over your competitor. So there are so many countries still they have to do or go miles in order to implement the initiatives taken by World Agency towards global warming. There are so many countries where it is not there still. So in those places, if our country sells our product, it will go a long way. So what I am saying is, firms marketing environmental friendly products and services will have a competitive advantage over firms marketing non-environment friendly products and services. For example, McDonald's, what they did, they replaced its calm shell packaging with waxed paper to minimize ozone depletion. Now there are so many packages you have seen in the market that they have started doing. Now, what is the basic principle behind green marketing? We should understand that. I'll just tell you a few things. Green marketing involves focusing on promoting the consumption of green products. It becomes the responsibility of the companies to adopt creative and insight and to be committed to the development of environment-friendly products. They should be. Under green marketing concept, a company's marketing should support the best long-run performance of the marketing system. It should be guided by 5 sustainable marketing principles, that is consumer-oriented marketing, customer value marketing, innovative marketing, sense of mission marketing, and social marketing. These are the 5 things which every company will have to talk about in order to place green marketing. The challenges before producers and marketers of green products are many. Green marketing strategies provide more benefits to consumers as well as the society. It also helps to create green environment by adopting eco-friendly marketing practices. Even though getting more beneficial from green marketing, there is a lot of challenge or hurdles also available for its development. Now, what are those things? Green products require renewable and recyclable materials, which is costly. Yes, it's going to happen. This is challenge that how you will have cost control, because the things which is required for it is going to be costly one. Then still, if you are to reduce your cost, now you are going to do that. Number second is requires a technology, and this requires huge investment in R&D. Now, if you want to introduce this green marketing system, you will have to have new technologies. As I told you just now about Voltas, they have changed their machines around. So many machines, because the gas injecting machine, puff insuring machine, injecting machine, every machine has to be changed, and all the machines were of crores of rupees. Then
The compression which was there earlier has to be changed because now it has to be compatible with the carbon free gas. Refrigerator has to be designed accordingly. So all this is additional cost to them. So it requires huge investment in R&D. Water treatment technology, which is too costly. I told you that every plant has to have a water treatment plant. Without that, they won't call that we are a green product, green company. Sometimes the company also call that we are a green company. So that means whatever product we give, it goes green product. The majority of the people are not aware of green products and their uses. Now, majority is not aware. Yes, in the town you are aware. Go and ask in your village. Are they aware about it? Do they have any idea about it? So it becomes our responsibility also to teach them, make them aware about it, that how it is going. उनसे पूछो भाई गर्मी में इतना क्यों मर रहा है, क्यों इतनी गर्मी पड़े, 20 साल पहले पड़ता नहीं पड़ा, 20 साल 30 साल से नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, क्या कारण है, why it has become like that? So we'll have to make them teach them. Yes, it is like that. No. So this is what I will say. I'll have few takeaways. Then I will stop. Green marketing describes a company's effort to advertise the environmental sustainability of its business practices. So you will have to advertise, you will have to tell that my product does not harm the ecological system. So we are good company that way. The emergence of a consumer population that is becoming increasingly concerned with environmental, आप नहीं हो, आपके बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, है ना? And societal factors has led to the green marketing becoming an important component of corporate public relations. One criticism of green marketing practices is that they tend to favor large corporations that can absorb the additional cost entailed by these programs primarily. Now this point is really valid. What we should understand, that when we want to convert our plant into green marketing plant and a green product plant, the investment cost is very huge. Then what will happen to the small scale industries, those who are not having that capital? That is very important area, because when we talk about India, we need to understand that SSI is our backbone. It creates huge job opportunities. So can we really ignore them? Answer comes no, it cannot be ignored. That means the government will have to come with different initiatives, different package for SSI unit, so that they can convert their unit from conventional to green product companies, and that does not become a liability on them. With that, thank you. Thank you, sir, for sharing your thoughts on global warming, its effects, and what the industry needs to do. And over and above all, what the government needs to do, how it can support the industry in going green. Now, I would request Dr. Amarnath Pandey, sir, to share his inputs on green marketing. Just to share a few words about Amarnath, sir. He is a committed senior educational professional with over 16 plus years of experience at leading academic institutions, teaching students from various social and cultural backgrounds. He is presently associated with Nalanda Open University as lecturer and coordinators. Some of the achievements or milestones has surpassed is he was actively involved in the implementation of NME ICT project of Department of HRD Government of Bihar in the university, and he was selected as the nodal officer for implementing National Knowledge Network project of Government of India in his university. So sir, please share your thoughts on green marketing. Thank you very much, Professor R.K. Singh Sahab, Director ISM Patna.
मिसेस प्रेरणा गुप्ता, हेड एनसीसी, श्री शैलेंद्र कुमार, सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल, श्री मोहित कुमार, चैनल हेड यूरेका फोर्स, श्री सर्वदा शंकर, को फाउंडर क्रेडा, प्रोफेसर पीके अग्रवाल, रिटायर्ड हेड पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, all the organizer of this event, especially the co-convener Nayan Ranjan Sinha sir, teachers of this green campus, ISM Patna, energetic students and very disciplined students, I would like to say that. Staff members of ISM, staff members of ISM, media persons, ladies and gentlemen. So my speech will be mixed with in Hindi, in English, both, and basically the main concept which I am going to tell you that is directly related to the green marketing. So I will like to point some features of digital marketing. So please next slide. Slide is going on, you may just concentrate on that. Digital marketing basically है क्या? Digital marketing is an act of promoting products through mobile devices, through gadgets, through internet. Digital marketing यही है. तो ये कंसेप्ट आया कैसे? बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग 2014 से ही एक्टिवली चल रहा है और जैसे जैसे चेंजेस हुआ अब डिजिटल मार्केटिंग का जो स्वरूप है वो बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर को बिलोंग करता है. नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं कि ये जो हम सभी लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सभी लोग के पास स्मार्टफोन है, तो एक ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट है या जो पर्सन है वो जो भी यूज कर रहे हैं, ये तथ्य सामने आया है कि मिनिमम 200 minutes per day all people are using smartphone. तो हम लोग सोचिए कितना ज्यादा स्मार्टफोन पे हैं, अपने मोबाइल फोन पे हैं. मिनिमम 200 मिनट तो लोग यूज कर ही रहे हैं. और अगर हम देखें एक 2021 के डेटा से तो हर 60 सेकेंड्स में जो इवेंट जो इंटरनेट पे हो रहा है वो है जैसे फेसबुक है, 1.4 मिलियन पोस्ट या स्क्रॉल्स हो रहा है हर 60 सेकेंड्स में. अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें जो बहुत पॉपुलर है ना, तो नेटफ्लिक्स में करीब 28,000 सब्सक्राइबर हर 60 सेकेंड पे वो कुछ ना कुछ कंटेंट यूज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं. उसी तरह से YouTube में है 500 आवर्स का वीडियो अपलोड होता है हर 60 सेकेंड्स में. तो सोचिए कि कैसे हम लोग डेटा आप कंज्यूम करना शुरू कर दिए. इस तरह का ये एक पिक्चर देता है कि अगर आप इंस्टाग्राम का देखिए तो वहां पे 6,95,000 पोस्ट हर 60 सेकंड्स में ये हो रहा है. ये 2021 का डेटा है. ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अब जो पॉपुलेशन है वो जा रही है डिजिटल मार्केटिंग या फिर कहीं यूज कर रही है स्मार्टफोन को, और ये एक बेस है डिजिटल मार्केटिंग का. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. डिजिटल मार्केटिंग बात करने के पहले थोड़ा ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करना होगा. क्या डिफरेंसेस है दोनों में? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो है रीच लिमिटेड होता है, इसका रीच मैक्सिमम है. कैसे होता है थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम आगे के साइड में. नॉन वर्सेटाइल है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेटाइल है. डिलेड कम्युनिकेशन है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग जो है इंस्टेंट कम्युनिकेट करता है. आपके मोबाइल में जैसे ही एड फ्लैश हुआ आपने देख लिया उसको. इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पे है कैसे ये अंतर है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग. कहने का मतलब है कि अगर कोई एड हमको लोकल चैनल पे देना है, मान लीजिए टीवी बिहार पे देना है, तो जो कॉस्ट आएगा 10 सेकंड से 30 सेकंड का, अगर मान लीजिए इसको 1 लाख से 10 लाख आ सकता है. ये लोकल हम चैनल का बात कर रहे हैं, टीवी बिहार टाइप या और उससे भी कम. अगर इसी को हम नेशनल चैनल की तरफ देखें तो वो करोड़ों में आ सकता है उतना समय, है ना. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या है?
कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत ही सस्ता होता है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं कीजिए, थोड़ा उसी साइड पे आइए, बैक हो जाइए। यू हैव नो चॉइस टू टारगेट रेलेवेंट सेट ऑफ कस्टमर्स। आप जब प्रिंट मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर जो है प्रिंट मीडिया का एग्जांपल है, उसके थ्रू अगर आप एडवर्टाइज करते हैं, अगर आप टीवी के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं, तो आपके पास टारगेट ऑडियंस या फिर सेट ऑफ रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचने का कोई विकल्प नहीं होता है। वो आप फ्लैश कर दिए, जिसको देखना है देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए, उससे रिलेटेड था नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, आप आराम से अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं कि मेरा ये सामान जो है इस पर्टिकुलर के लिए ही वैलिड है, तो वहीं पे ये डिस्प्ले होगा। तो इससे क्या होगा कि आप कॉस्ट बचाएंगे, है ना। आप rather than आप सभी जगह फ्लैश करने के, उस पर्टिकुलर के सभी कॉस्ट से रिलेटेड। You will end up pumping the budget to mass crowd। बजट से आपका ये है कि भाई ट्रेडिशनल मार्केट में आपका ज्यादा बजट कॉस्टली है। ये प्रोमोटिंग प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता क्या है, आप प्रोडक्ट का प्रमोटिंग करते हैं थ्रू टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, पीआर एक्टिविटी, डोर टू डोर कैंपेनिंग, ये सब सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का है। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, तो उससे आप प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कैसे प्रमोट करते हैं, है ना, थ्रू फेसबुक, इंटरनेट, गूगल। तो ये सब अलग अलग माध्यम है डिजिटल चैनल का, जिसके थ्रू आप उसको प्रमोट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका डिफरेंस है कि आप रिजल्ट नहीं आप इसको मिल सकता है कि ये कहाँ गया। आप अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू कोई एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग किए हैं, तो इसका आपको पता नहीं चलेगा कि हम ये क्या कहें कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने इस पे क्या किया, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको पूरा वेब एनालिटिक्स के द्वारा, है ना, सारा चीज आप देख सकते हैं कि किसने देखा, कहाँ का, किसने किस लोकेशन के लोगों ने देखा, किसने 2 बार देखा, कितनी बार देखा। ईच एंड एवरी एनालिटिक्स रिपोर्ट यू कैन गेट इट फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए डिजिटल जो मार्केटिंग है वो 7 टाइप्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। आप सभी लोग मैनेजमेंट के छात्र हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी में इतना एक्सपर्ट हो जाइए कि आप एसईओ करना शुरू कर दीजिए आप, बट यू शुड नो दैट ये फीचर से हम क्या कर सकते हैं। आप चाहिए तो अपना वेबसाइट बनवा सकते हैं, यू कैन मेक योर ओन ब्लॉग्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है फ्रीली, कुछ पेड सर्विसेज भी है, बहुत कम खर्च लेता है, टेम्पलेट टाइप का चीज आपको अवेलेबल होगा, यू कैन क्रिएट योर ओन। तो सबसे पहला अगर हम देखें ऐसे 7 जो डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम है, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग एंड मोबाइल मार्केटिंग, है ना। नेक्स्ट, एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ रेलेवेंट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। देखिए एसईओ है क्या। सभी बड़ी कंपनियां, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मिंत्रा हो, सभी बड़ी कंपनी, मार्केटिंग कंपनी, सभी लोग अपना अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करता है उसमें। जब आप सर्च करते हैं गूगल पे ऑनलाइन शॉपिंग, तो क्या आता है इसमें, जो टॉप फर्स्ट पेज में जो भी आता है वो टॉप मार्केटिंग कंपनी का लिस्टिंग आ जाता है ना। एसईओ बेसिकली क्या टेक्निक है कि आपके वेबसाइट को किसी कीवर्ड्स को यूज करते हुए वो ऐसा ट्यून करेगा कि गूगल के फर्स्ट पेज पे ही वो लिस्टिंग होगा, गूगल के फर्स्ट पेज पे आपका वो आना शुरू होगा। बेसिकली हम लोग सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे पेजेस गूगल के आते हैं, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, फर्स्ट पेज पे ही जो लिंक मिला उठाए काम किए, जनरली ये टेंडेंसी है ना। हम लोग सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज पे नहीं जाते, तो हम लोग बेसिकली फर्स्ट पेज पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ऑलरेडी एसईओ करवाई रहती है, किया रहता है उनके में, इसलिए जो भी चीज है वो तुरंत अमेजन का आ जाएगा, फ्लिपकार्ट का आ जाएगा, मिंत्रा का आ जाएगा, एजियो का आ जाएगा, है ना। तो जो भी, अगर आप अपने वेबसाइट आप बना रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए, तो आपको सबसे पहले अपने वेबसाइट का एसईओ करवाना होगा, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो सर्च लिस्ट में फर्स्ट पेज पे मेरा 1 से 10 में, 1 से 20 में मेरा वो रहे, ताकि कस्टमर को डायरेक्टली दिखाई पड़े। ठीक है। एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, इसमें क्या है, नेक्स्ट कर दीजिए, नहीं थोड़ा सा पीछे, अच्छा ठीक है, थोड़ा एक स्टेप आगे ले लीजिए, फिर से
ये बेसिकली देखिए सर्च इंजन सब लोग जानते हैं, बहुत सारे सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, बिंग है, बहुत हम लोग बेसिकली गूगल ही यूज करते हैं। याहू भी बहुत पहले से अपना लेके आया हुआ है सर्च इंजन, गूगल बाद में आया है, लेकिन याहू उस समय जिस समय सर्च इंजन लाया था उस समय जब याहू आप खोलते थे तो याहू के साथ आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन खुल जाता था, उस पेज पे बहुत सारा न्यूज खुल जाता था, आर्टिकल खुल जाता था, मेल के लिए एक स्पेशल जगह होता था और सर्च इंजन के लिए छोटा सा एक बॉक्स होता था, लिखा था सर्च, है ना। लेकिन गूगल को जब आप खोलते हैं तो गूगल में सिर्फ गूगल और बड़ा सा बॉक्स रहता है सर्च इंजन का। सोचिए वो कितना बड़ा गेम खेला है, कितना बड़ा प्लानिंग किया है, वो कुछ उसमें मटेरियल नहीं डाला, पूरा एम्प्टी पेज रहता है ना। और वो खाली कंसंट्रेट किया सर्च पे, कि वो जानता था कि वो आपको ट्रैक भी कर रहा है, आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपके प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं, वो सभी आपको ट्रैक कर रहा है, और जानता था कि इस सर्च के द्वारा हम अपने कस्टमर को डायरेक्टली उसके प्रेफरेंसेस को जान जाए। बाद में क्या हुआ कि याहू ने भी उस चीज को अपनाया। आज के डेट में आप याहू खोलिएगा तो उसका एक बड़ा सा सर्च इंजन आता है, बाकी सब उसको छोटा छोटा टैब में नीचे में दे देता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज देखना है, कुछ ये देखना है, कुछ वीडियोस देखना है, तो उसका धीरे धीरे आता है। तो क्या चेंजेस वो सीखा गूगल से, है ना। नेक्स्ट, इसी कारण से गूगल का जो मार्केट शेयर है आज के डेट में दैट इज 73%, सबसे ज्यादा गूगल है, 2 और 3 नंबर पे बिंग और याहू आता है, और भी अदर्स है। नेक्स्ट, अब देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हम जैसे बोले कि ऑनलाइन शॉपिंग आप जैसे ही लिखते हैं तो बहुत सारे फर्स्ट पेज पे लिस्टिंग होती है, इसमें से जो लिस्टिंग है जैसे अमेजन का आ रहा है, इसी तरह से और अगर होगा तो नीचे फर्स्ट पेज पे जो भी आएगा वो पहले पेज पे जो भी आया तो समझिए कि एसईओ किया हुआ है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग। ये बेसिकली क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग अ बिजनेस यूजिंग पेड एडवर्टाइजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम गूगल को पे करेंगे कि भैया मेरा एक वेबसाइट है, उसको आप इतना पैसा लीजिए और कुछ दिन के लिए मेरा टॉप पे रखिए ताकि मेरा कुछ पैसा कमा ले, है ना। तो ये पेड चीज हुआ। नेक्स्ट, आप कैसे रिकॉग्नाइज कीजिएगा कि किसने लिंक ने पैसा दिया है गूगल को? इस समय सर्च इंजन का जो लिस्टिंग होता है, जब आप कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे एडी बना रहेगा। देखिए वहां पे सिर्फ व्हाट यू लव फ्रॉम यूएस है, उसके नीचे एडी लिखा हुआ है, घेरा हुआ है। दैट मींस इट इज एन एडवर्टाइजमेंट, है ना। एंड दिस पर्टिकुलर लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड बाय गूगल आफ्टर रिसीविंग सम मनी फ्रॉम द मेकर ऑफ द वेबसाइट, डेवलपर ऑफ द वेबसाइट, ठीक है ना। ये इस तरह से आप रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसको कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। आप अपने वेबसाइट बना लिए, आप गूगल को पैसा दिए कि भैया मेरा भी लिस्टिंग करवा दो, है ना। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। आज हम लोग जहां भी जाते हैं, आप होटल में चले जाइए, आप जूता खरीदने चले जाइए, मोची में चले जाइए, कोई अच्छे ब्रांड में चले जाइए, दुई फिलिप में चले जाइए, आपसे एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एक फॉर्म देगा, नहीं भी देगा तो बोलेगा ठीक है सर नहीं भरी, हम अपने कंप्यूटर में लिख लेते हैं। वो डेटा कलेक्ट कर लिया आपसे, आपका मोबाइल नंबर ले लिया, आपका ईमेल ले लिया। नाउ दे विल बिगिन टू पुश देयर ऑफर्स एंड एवरी न्यू इंफॉर्मेशन टू योर ईमेल एंड मोबाइल, ठीक है ना। वो इसके थ्रू मोबाइल मार्केटिंग करते हैं। या फिर आपको सर्च कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो जनरली आजकल जितना भी देखिएगा आसान नहीं है सर्च करना। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसको पहले वो रजिस्टर करवा लेता है आपको। रजिस्टर करने में 2 चीज तो लेता ही लेता है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अब आप उसके डेटाबेस में आ गए हैं, वो आपको पंप करते रहेगा, पुश करते रहेगा अपना सारा ऑफर, सारा। ये एक मेथड है ईमेल मार्केटिंग का। तो आप जब भी मेल खोलते होंगे, ऐसे तो बहुत सारा मेल को हम लोग स्पैम में डाल देते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो आप जब भी मेल खोलते होंगे तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, बैंक्स का ऑफर, मिंत्रा का ऑफर, अलग अलग शॉपिंग साइट्स का ऑफर, वो दिखेगा ही दिखेगा, सभी को दिखता है ना। तो दिस इज द मेथड ऑफ ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए जैसे एग्जांपल है, ईमेल किसी को आया, द क्लॉक इज टिकिंग नाउ, आवर सेल एंड्स टुनाइट, गेट 30% ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा आता है कि भाई 12 बजे तक ये सेल है ना, 30% हम देंगे। कूपन कोड इसमें दिया हुआ है, आप साइट पे जाके इस कूपन कोड को यूज करके आप परचेज कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज द मेथड। अब आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? आपका कोई प्रोडक्ट, या मान लीजिए कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं है, कोई बेसिकली कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ है और उस मोबाइल का रिव्यू या फिर उस मोबाइल का किसी ने वीडियो कंटेंट बनाया है,
YouTube पे जाके वीडियो कंटेंट उसका रिव्यू कर दिया, हाँ ये मोबाइल ये खासियत है, इसका डिस्प्ले ऐसा है, ये इसका इतना जीबी रैम है। या किसी कार आप खरीदने जा रहे हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, कार या बाइक खरीदते हैं तो हम लोग आजकल पढ़ना नहीं चाहते हैं उसके ब्रोशर को लेकर कि क्या क्या फीचर्स है। आप क्या करना चाहते हैं, आज की पब्लिक जो है सीधा YouTube पे जाती है और वीडियो देखना पसंद करती है, ताकि हम अलग अलग लोगों का व्यूज देख लें, फिर हम परचेस करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, है ना। ये आज का टेंडेंसी। तो ये ऐसा ही नहीं कहना कि हर आदमी आज के डेट में 300 से 200 मिनट पर डे यूज कर रहा है, तो उसका रीजन, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको कोई कार खरीदना है या कार से रिलेटेड एसेसरीज खरीदना है, आप उस पर्टिकुलर कार के एसेसरीज के लिए आप YouTube पे गए, YouTube पे आपको बहुत सारा यूट्यूबर के द्वारा दिया हुआ अपलोडेड वीडियो मिला, आप उसको देखें। वीडियो के अंत में अगर आप YouTube देखे होंगे तो जरूर बोलता है कि मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है सारे वीडियो का, और एक लिंक भी है जहां से आप आसानी से उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। आप जहां से आसानी से उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, दैट मीन्स कि वो उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस लिंक से खरीदते हैं तो ऐसा मत समझिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा यू विल हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट, वो नहीं। सिर्फ दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग, मींस कि जिसका भी वो प्रचार कर रहा है, जिसको भी वो प्रमोट कर रहा है, जब आप उस लिंक के थ्रू खरीदिएगा देन ही विल गेट सम कमीशन, ही विल गेट सम कमीशन। ऐसा नहीं है कि आप अपने से जाके खरीद लीजिएगा तो आपको पैसा कम लगेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है ना। कंपनी उसको प्रमोट करने का वो पैसा देती है, वो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये कस्टमर है, थ्रू एफिलिएट कोई प्रोडक्ट परचेज किया, मर्चेंट ने एफिलिएट को कुछ कमीशन दे दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, सभी लोग जानते हैं, रोज देख रहे हैं, कोई नया नहीं। व्हेन यू आर यूजिंग फेसबुक, जब आप स्क्रॉल करते हैं यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओवर देयर, रहता है ना। स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई मिंत्रा का आ गया, कोई कार नया लॉन्च हुआ उसका आ गया, आते रहता है ना, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर देखिए इंटरनेट इतना समुंदर है कि आपको ट्रैक किया जाता है, आपके लोकेशन को ट्रैक किया जाता है, आपके चॉइस को ट्रैक किया जाता है, प्रेफरेंस को ट्रैक किया जाता है, ये आपको पता नहीं चलता। और सबसे बदमाश गूगल आप कहाँ गए थे, हम ISM में हैं, ये लोकेशन ट्रैक हो गया। हम नेक्स्ट मंथ अगर देखेंगे अपने टाइमलाइन पे, गूगल के टाइमलाइन पे देखेंगे तो बता देगा कि इस समय इतने बजे आप ISM में थे। आप जहां जहां जा रहे हैं, देयर इज अ फीचर इन गूगल दैट यू कैन ओपन इट एंड सी इट योरसेल्फ कि आप पिछला 6 महीना में कहां गए थे। और एक आध बार आपने देख लिया तो करता क्या है गूगल, कि वो देखता है कि अच्छा ये बार बार अपना टाइमलाइन देखता है तो आपके मेल पे ही टाइमलाइन डाल देगा कि लीजिए आप पिछले 6 महीना में आ गए थे, आपको और आसान कर देता है ना। तो ये एक टेक्निक है गूगल का आपको पकड़ने का, ठीक है। आपके हर चॉइस को, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, आपका क्या एक्सपेंस का ये है, कैपेसिटी है, और चीज उसके पास कैप्चर्ड। आज के डेट में हम उसके एक तरह से कहिए कि हर इंफॉर्मेशन उसके पास। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे फेसबुक पे कोई भी ये आ रहा है, ऐड आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल आपको है कि जैसे फेसबुक का ही ऐड, ये बेसिकली कल ही हम डाले हैं, कल ये आ रहा होगा मेरे फेसबुक पे, आपके पे भी आएगा, है ना। ये है कि AGI का कोई प्रमोशन है जो 40 से 70% स्नीकर्स पे ऑफ है। या जो टोयोटा इंडिया है अपने अर्बन क्रूजर का कर रही है कि 7,999 में EMI में आप ये ले सकते हैं। तो इस तरह का एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एडवर्टीजमेंट करना बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता। करने का मतलब है कि आप 80 रुपीज पर डे, हम आपको अभी कॉस्ट इफेक्टिव वाली बात बता रहे हैं, 80 रुपीज पर डे से आप ये चीज शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसका एक शर्त है कि 80 रुपीज में हम 2000 लोगों को देंगे, 2000 तक आपका पहुंच, 80 रुपये टारगेट 2000 है ना। मान लीजिए कि उसको 100 रुपया कर देता है तो कहेगा कि हम 4000 को पहुंचाएंगे, इस तरह से वो बढ़ाते जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का वो कैंपेनिंग है। कंटेंट मार्केटिंग, मान लीजिए आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप बहुत अच्छे डाइटिशियन हैं, आप अपना कोई ब्लॉग शुरू किए हुए हैं और अट्रैक्ट करना चाहते हैं कंज्यूमर को, कस्टमर को अपने ब्लॉग के तरफ, ठीक है। तो आपने क्या किया, वीडियो बना के उसमें डाल दिया, YouTube पे डाल दिया कि डाइट प्लान के लिए आपको दुबला होने के लिए कुछ डाइटिंग टिप्स,
जल्दी से सब लोग देखता है कि जल्दी से कैसे दुबला जाए, है ना, देखता ही देखता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मान लीजिए इस तरह का कोई यूट्यूब पे है 7 days इंडियन वेट लॉस डाइट प्लान फॉर वुमेन, ठीक है, तो ये बहुत ही अट्रैक्ट करता है ऐसे लोगों को जो इसमें समय के अभाव के कारण नहीं कर पा रहे या आज करेंगे कल करेंगे सोच रहे हैं, लेकिन वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इस तरह का एक वीडियो होता है, जैसे YouTube के बारे में पहले बताएं, उसमें ऑलरेडी डिटेल्स रहता है उनका कि ये खाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे सुबह उठिए, ऐसे जॉगिंग कीजिए, सारा प्लान रहता है। इसके बाद फिर एक डिस्क्रिप्शन रहता है नीचे में विद ईमेल एंड मोबाइल नंबर कि अगर फर्दर आपको और भी मैनेजमेंट चाहिए और क्विक रिस्पॉन्स रिजल्ट चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल, दिस फोन नंबर, है ना। हम आपको और भी यहीं से बैठे बैठे ट्रेन कर देंगे, आपको 500 रुपीज पर मंथ, ये प्रमोशन है ना, दिस इज प्रमोशन। तो इस तरह से भी हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारा कंटेंट मार्केटिंग में उतना आगे नहीं जाएंगे, है ना। अभी जो भी हम बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इजी लैंग्वेज में लेमैन को भी समझने के लिए, कोई भी टेक्निकल साइड इसका नहीं है। नेक्स्ट है मोबाइल मार्केटिंग। सबके पास आता है मैसेज, मिंत्रा का ऑफर इज गोइंग टू बी क्लोज टुडे, किसी और साइट एडिडास, है ना, आज के डेट में ये ऑफर, इतने तक ये ऑफर। तो इस तरह का जो भी मैसेज आपके पास मिलता है वो बेसिकली मोबाइल मार्केटिंग है। मोबाइल मार्केटिंग में मैसेजेस के थ्रू नहीं, हम खाली मैसेज ही एक पार्ट नहीं हुआ उसका। जैसे बहुत सारे ऐप आप लोग यूज करते हैं, वेब दुनिया का जो कोई ऐप है या इस तरह का कोई छोटा मोटा ऐप है, तो बेसिकली वो क्या करता है, देखे होंगे कि स्पिन ऑफ व्हील करके बहुत सारे ऐप में आता है, स्पिन ऑफ व्हील, और जब आप क्लिक कीजिएगा तो चक्का घूमता है और चक्का घूम के फिर वहां पे 8 या 9 या 7 जिस पे भी रुका वो सब के साथ एसोसिएटेड रहता है कोई ना कोई प्राइजेस। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वन ए कूपन फॉर अप टू 40% डिस्काउंट ऑन जोमेटो वैलिड टिल सच एंड सच डेट एंड टाइम, रहता है ना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मोबाइल। वो आपको ऐप के थ्रू हुआ, आपने एक स्पिन ऑफ व्हील किया, आपको एक्साइटमेंट हुआ दैट यू हैव वन अ सर्टेन थिंग, आपको एक कूपन मिला दैट वाज सेइंग दैट यू हैव टू अवेल दिस कूपन टिल दिस पीरियड, है ना। दिस इज आल्सो मोबाइल मार्केटिंग। नेक्स्ट देखिए एक मैसेज का एग्जांपल है। नेक्स्ट उसी तरह से कोई चीज मिलता है तो उसमें कांग्रेचुलेशंस और ये कूपन इस तरह का। नेक्स्ट अब एडवांटेज, है ना, अगर हम एडवांटेज पे आए डिजिटल मार्केटिंग का, ट्रेडिशनल का तो इसमें एडवांटेज एक बार आपने प्रचार कर दिया, कहाँ गया नहीं गया, क्या हो रहा है, कितने लोग देखे, है ना, बहुत ज्यादा उसका आप नहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज का अगर देखते हैं तो कोई भी किसी भी वेबसाइट पर जाके कोई परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए हम वहां पे एग्जांपल दिए 100 लोग वहां विजिट की, 100 ट्रैफिक आई उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, है ना। ये एडवांटेज इसका सबसे पहले है इंप्रूव्ड कन्वर्शन रेट, कि आप डिजिटल मार्केटिंग करके कन्वर्शन अपने सेल का कर सकते हैं, बहुत कन्वर्शन अच्छे से हो सकता है। इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। किसी भी वेबसाइट के थ्रू 100 लोग वहां पे गए और 10 लोगों ने किसी प्रोडक्ट को खरीदा, ठीक है, लेकिन 10% कन्वर्शन रेट हुआ, 100 ट्रैफिक आई तो 10% रेट कन्वर्सन हुआ। अब 90 लोग नहीं लिए उसको, या नहीं लिए या फिर गए देखें, एक बार गए 2 बार गए, हो सकता है 90 में से 10-20 लोग जो हैं वो अपने उसको प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके कार्ट में छोड़ दिए। कार्ट में छोड़ते हैं ना हम लोग, अच्छा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कार्ट में रख देते हैं, ठीक है, तो शॉपिंग कार्ट में उसको सेलेक्ट करके अपने पास रख लिया। अब क्या होता है, ऐसे 90 लोगों को कंपनियां जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, उस लेवल की कंपनियां जो उसके पास डेटा है ना, वो जान रही है कि आप प्रोडक्ट देख चुके हैं लेकिन आप ले नहीं रहे। वो क्या करती है, अब आप दूसरे कोई अपना जीमेल खोले तो वहां पे जो आप कार्ट में छोड़े हैं उसका बगल में फोटो आ जाएगा। आप कोई और दूसरा साइट पे गए फिर से वो प्रकट हो जाएगा, बोले अरे यार तो हम कब देखे थे, अभी हमको तंग कर रहा है, यहाँ पे बगल में भी आ गया। तो हर साइट, ईच एंड एवरी साइट विच यू आर विजिटिंग, ये होता है थ्रू एल्गोरिदम एंड थ्रू एक लॉजिकल कैलकुलेशन उन लोगों का है, वेब एनालिटिक्स है, जो आपको पकड़ लिया कि आपको ये एडिडास का शू लेना है तो उसको हर जगह नजर आएगा, हर साइट पर नजर आएगा कि आपने कार्ट में उसको छोड़ा। तो कंपनियां आपको रीटारगेट कर रही है अगेन टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बड़ी बड़ी कंपनियां का देखिएगा वो आते रहे। अब आप कार्ट में छोड़ चुके हैं तो आपको मैसेज भेजेगा कि आपने कार्ट में कुछ मिस कर दिया है, आप उसको खरीदिए, है ना।
आपको मेल आएगा कि आपने अपने शॉपिंग कार्ट में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट छोड़ दिया है, उसको खरीदिए। कंपनी बार बार आपको नॉक करती है ऐड के द्वारा, मेल के द्वारा। अब आप फिर भी नहीं खरीदे, लास्ट उपाय कंपनी क्या करती है, मान लीजिए 10,000 का प्रोडक्ट था तो उसको कहेगी कि भाई ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफर सिर्फ आपके लिए है, 2,000 डिस्काउंट है, 8,000 में आपको मिल जाएगा। अब आपको लगेगा कि अरे 10,000 में मिल रहा था हमको 10 दिन पहले, आज हमको 8,000 में दे दिया। नाउ यू विल कन्वर्ट, आप उस प्रोडक्ट को ले लीजिएगा जल्दी, क्या कि आप तो उसको आपको बार बार दिखाई पड़ रहा है ना, तो आप उस प्रोडक्ट को ले लीजिएगा। तो बहुत ही इंप्रूव्ड कन्वर्सन रेट है ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट डिसएडवांटेज भी इसका बहुत हाई कंपटीशन हो गया है ना। ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस हाउसेस आर यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। आज के डेट में सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं। ग्लोबली बहुत सारा कंपटीशन है, लेकिन उस कंपटीशन को हम हरा सकते हैं कैसे, अपना एक स्ट्रेटजी बना के, अच्छा अच्छा कैंपेन चला के, प्लानिंग करके और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट, और भी इसका डिसएडवांटेज है ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग का। बेसिकली अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और आपने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो कंपनी कभी नहीं चाहती है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग वाली कंपनी या नहीं चाहती है कि उसके जो जिस प्रोडक्ट का वो स्पॉन्सर कर रहा है, जिस प्रोडक्ट का वो प्रचार कर रहा है, उसका कोई नेगेटिव फीडबैक आए, उसके लिए बहुत ही बुरी बात होती है। तो चाहेगा आपको पर्सनली 1-to-1 कॉल करके सॉर्ट आउट करना, रिजॉल्व करना इशू को, है ना, और तब वो चैन का सांस लेगा। एक खराब रिव्यू, आप लोग सभी लोग यंग जनरेशन के लोग हैं, जो भी आप लेते हैं आप रिव्यू जरूर देखते हैं। अच्छा हेडफोन, ब्लूटूथ वाला हेडफोन है, देखो रिव्यू देखो तो यार कितना लोग लिया, कितना सब हल्ला किया है कि गड़बड़ होता है ना। तो ये रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब मैटर रखता है मार्केटिंग, ऑनलाइन डिजिटल या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। तो नेगेटिव रेस्पॉन्स या कंप्लेन इज नॉट गुड, इट इज अ डिसएडवांटेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। इससे बचना है और इसको रिजॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप कीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा या फिर नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा, बट यू हैव टू रिजॉल्व दैट। और जैसा ही आप रिजॉल्व करते हैं, आप उसको आप बोलते हैं कि आई एम गिविंग यू सम अनदर प्रोडक्ट इन रिप्लेसिंग दिस, आई एम रिप्लेसिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको वहां पे एक बार सही कर देंगे, वो फिर वहां लिख देता है कि हाँ कंपनी हैज सॉर्टेड मी, थैंक यू वेरी मच, आपका फिर से वो सही हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया फिर से खरीदने वाले को कि नहीं ये कंपनी से खरीदेंगे तो हमको कोई चिंता नहीं है, मेरा पैसा डूबे हुएगा नहीं, पैसा लौट जाएगा या फिर प्रोडक्ट चेंज होगा, है ना। नेक्स्ट, वेब एनालिटिक्स की बात की है हम लोग। वेब एनालिटिक्स में होता क्या है, एनालिटिक्स अलाउ मार्केटिंग मैनेजर्स टू ट्रैक ऑनलाइन यूजर एक्टिविटी, जो बताया था आपको, ट्रैक करते रहता है ना। Capturing and analyzing this data is foundational to digital marketing because it gives companies insight into online customer behavior and their preference. जो कस्टमर आपका जो प्रेफरेंस है वहां कैप्चर हो रहा है, वहां लॉग हो रहा है। The most widely used tool for analyzing website traffic is Google Analytics। हम लोग जानते हैं Google Analytics है, Facebook का अपना एनालिटिक्स है ना। तो इस तरह का ये सारा चलते रहता है। नेक्स्ट, चैलेंजेस डिजिटल मार्केटिंग का। जो अगर ये चारों चैलेंज को हम पूरा कर लेते हैं तो हम सक्सेसफुल एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनर या कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो है क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट। कंटेंट जो आपका होगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जो आप वेबसाइट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए न्यूज ब्लॉग का आप वेबसाइट बना रहे हैं, न्यूज आपको मन किया कि हम अपना एक ब्लॉग खोलते हैं, तो क्या बहुत आसान है, सभी एक जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उसका अपना ब्लॉग होता है, हम आपसे बोलेंगे कि आप भी अपना एक ब्लॉग बनाइए, पूरा अपना उसमें सारा चीज रखिए। आप उसमें न्यूज का ब्लॉग बना सकते हैं, आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड उसमें सारा चीज लिख सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा चीज रख सकते हैं, या जो आपको इंटरेस्ट वाला फील्ड है, एक्टिंग से रिलेटेड है, यू पोस्ट सम वीडियोस। और लेकिन कंटेंट चोरी का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ब्लॉग बनाया और न्यूज लेने लगे आप इंडिया टाइम्स का, उसका कॉपी पेस्ट करने लगे। आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। ऑनलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं तो डिलीट कर देता। होता क्या है कि वो जहां मैच हुआ आपके वेबसाइट के एड्रेस से दूसरे वेबसाइट का एड्रेस, तो देख लेगा सोर्स कौन सा ओरिजिनल है, आपका डिलीट कर देगा। आप अपना कंटेंट रखिए। अगर आप दूसरा कंटेंट लेना चाहते हैं, देन गिव देम एक्नॉलेजमेंट टेकन फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड। नहीं करेगा, दिस इज अ टेक्निक। अगर आप अपना भी डाल रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा आर्टिकल वहां था, यू जस्ट एक्नॉलेज दैट, ठीक है ना, वो आपको कुछ नहीं करेगा। अगर आप नहीं मेंशन कीजिएगा ये चीज,
आपका वेबसाइट बंद कर देगा, एक दो बार देखेगा बंद कर देगा, आपको मैसेज भी भेजेगा, मेल भी भेजेगा, है ना। स्ट्रिक्ट इसमें वो कार्रवाई होती है, कोई भी किसी का नहीं ले सके। तो पीछे आइए अभी थोड़ा सा बैक। तो जो आपका कंटेंट है वो जो है ना, बहुत ही वैल्यूबल है, ओरिजिनल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको प्रमोट करना होगा वेबसाइट में, तो हम बता चुके हैं प्रमोट करने के लिए SEO के द्वारा आप प्रमोट कर सकते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट है बिल्डिंग एन इफेक्टिव वेबसाइट, आपको वेबसाइट अच्छा बनाना ही होगा। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, सबसे टफेस्ट काम है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोशन करने के लिए। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग के हेड हैं या फिर आप जान रहे हैं कैंपेन चलाते हैं, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक घड़ी है जो 1 लाख रुपए का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा ऑडियंस कौन है, वो भी टेक बिल करेगा। आपका टारगेट कस्टमर होना चाहिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज के जो लोग हैं, उनको टारगेट करना पड़ेगा। तो आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का ऐड पटना में नहीं देकर दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में अपना डाल, 1 लाख रुपए का घड़ी है, ये फीचर्स है, ये सारा चीज है, वहां पे रिच लोग हैं वो अफोर्ड करेंगे, ले सकते हैं। यहाँ पे चांसेस कम है आपके बिकने, है ना। तो आपको टारगेट ऑडियंस कौन है। इसी तरह से मान लीजिए कि आप लिपस्टिक का प्रमोट कर रहे हैं, कोई लिपस्टिक है, ब्रांडेड लिपस्टिक है, उसका प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रमोट जब कीजिएगा तो आपको टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए कि ये फीमेल ही ज्यादा यूज करती है। आजकल मेल भी थोड़ा करते हैं, है ना, लेकिन फीमेल ही ज्यादा यूज करती है। तो जो एक सिस्टम होता है डिजिटल मार्केटिंग का कि आप टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं, तो जिस समय आप कीजिएगा इसको प्रचार इसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो आपसे पूछेगा कहाँ करना, लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है। तो आप मान लीजिए कि लोकेशन डाले हैं, जैसे हम सिटी में रहते हैं, तो सिटी से जहां मेरा लोकेशन है वहां से 3 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर, रेडियस 3 किलोमीटर, कि मेरे यहाँ तो कोई खरीदने हाजीपुर वाला तो आएगा नहीं, मेरा अगर शॉप है इसको प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को, है ना। तो हम अपने जगह से, ये फीचर्स है, देखिए कैसे आप क्लोज मार्केटिंग कर सकते हैं। जो अगर आपको अमेजन को हराना है, फ्लिपकार्ट को हराना है, आजकल क्या है दिक्कत क्या हो रही है कि लोकल जनरल स्टोर्स में सेल कम हो गया है, लोग टूथपेस्ट भी अमेजन से मंगवा रहे हैं, सोप भी अमेजन से मंगवा रहे हैं, क्यों, किफायत पड़ता है ना, वो आपको डिलीवरी भी 2 दिन में दे दे रहा है, ठीक है। मिंत्रा जितना जो छोटा तुम्हारा क्लोथ मर्चेंट या फिर ड्रेस का सारा हाउसेज, अभी देखोगे होली का समय है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा सेल नहीं हो रहा है। दिक्कत क्या है, हर प्रोडक्ट्स पे जो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, वो जीन्स है 700 रुपए में दे देगा, 1400 का, बोले 50% डिस्काउंट, अच्छा ब्रांडेड जीन्स भी आ जाता है। तो लोकल लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, उन लोगों के लिए तो डिजिटल मार्केटिंग और है। जा हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, कोविड का समय, मेरे पास में ही एक रेस्टोरेंट है, तो उसने कहा कि भाई हमको तो बंद करना पड़ेगा, तो मेरे यहाँ तो लॉकडाउन हो गया, कस्टमर तो आ नहीं रहे हैं। FSSI भी उसके पास नहीं है कि हम जोमेटो और दूसरे जो ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं खाना, उसको हम कॉन्टैक्ट करके, उसके लिए FSSI मस्ट हो जाता है, वो अभी नया खोला था, FSSI के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मेरे पास आया, बोले कि इसमें कुछ डिमांड लगाया जाए, इसलिए कि बेसिकली हमको तो स्टाफ का पेमेंट भी करना है, डेली का एक्सपेंसेस भी है, सारा चीज है। तो फेसबुक ऐड को यूज करते हुए, फेसबुक ऐड, पहले तो फेसबुक का एक पेज बना सकते हैं आप लोग, फेसबुक ऐड को यूज करते हुए उसको बहुत ही आसान सस्ते दर पे पर डे 100, 200, 300 रुपया खर्च करके उसको प्रमोट किया। कोई भी पिज्जा है या फिर केक है या बेकरी का आइटम है, उसको प्रमोट किया। प्रमोट करने का, क्योंकि मेरा सिटी में है या कहीं पे भी है, तो मेरा प्रमोशन का दायरा क्या होगा, विदिन 2 किलोमीटर, है ना। अगर हम अपने स्टाफ भी रख रहे हैं कि हम उसको पहुंचा देंगे, तो विदिन 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 किलोमीटर में हम फेसबुक को बताएं, पूछता है आपसे कि आप कहाँ पे इसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपका लोकेशन वो तो पहले से कैप्चर किया रहता है ना। तो आपके लोकेशन से 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस पे वो जैसे ही आप कीजिएगा, तो वहां पे एक स्पॉटलाइट बन जाएगा, जीपीएस सिस्टम खुल जाता है मैप में, है ना, और वहां पे स्पॉटलाइट गोल ऐसा घूमता है। दैट मींस कि आपने उस एरिया को टारगेट कर लिया, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि कितना, किसको देना है, सभी को देना है, सिर्फ मेल को देना है, फीमेल को देना, आपने ऑल कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट तो भाई सभी को जाएगा, है ना। लिपस्टिक रहता तो आप खाली फीमेल कर देते हैं, ज्यादा जगह जाएगा कि आपका पैसा बचेगा, खाली फीमेल के स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा वो,
उसके बाद फिर पूछता है आपसे कि एज ग्रुप क्या है आपका, किस एज ग्रुप का इसको करना चाहते हैं। तो वो 0 से लेकर 70-80 तक रहता है। आप उस बार को खसका के कर लीजिए कि भाई मेरा अगर खाने का चीज है तो आप 10 साल से लेकर 70-80 साल तक में डाल दीजिए, है ना। अब आप उसको पोस्ट कर दीजिए। तो पोस्ट करने के बाद वो तुरंत वो नहीं वो आपका लॉन्च कर देता है। इट टेक्स सम टाइम। काहे करता है, वो देखता है कि जेन्युइन चीज है कि नहीं, कि ऐसा ही खाली फेसबुक बड़ी कंपनी है ना, कोई भी कुछ प्रोडक्ट उठा के डाल दिया तो उसके ऊपर रिसर्च करता है। इट टेक्स सम टाइम। अगर आप एक बार पहली बार टाइम देता है, 10 आवर्स से 12 आवर्स देता है, वो भी अपने सिस्टम से कैलकुलेट करता है, ये जीपीएस लोकेशन से उस पर्टिकुलर साइट को पहुंचता है, पूछता है, समझता है, तब वो जाके अपने साइट पे लॉन्च करता है कि नहीं ठीक है ये सही है। आप जैसा ही करते हैं उसमें एक और फीचर है कि जो यंग जनरेशन है फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करती है, सही है कि नहीं? तो इंस्टाग्राम किसका है? फेसबुक का ही है। आपको डबल बेनिफिट हो जाता है, आप ऐड डालते हैं फेसबुक पे, जाता है इंस्टाग्राम पे, तो आपको दोनों बेनिफिट हो रहा है ना। टारगेट ऑडियंस ज्यादा चलता है, कम पैसे। तो उससे इससे क्या हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, तीसरे चौथे दिन से जो कस्टमर नहीं आ रहे थे, है ना, फोन करने लगे कि हमको पिज्जा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमने आपका ऐड देखा है। और बहुत अच्छा एनालिटिक्स है, आप देख सकते हैं अपने से खोल के उसमें कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने 4 बार आके देखा है। का नहीं देखा है ये भी रहता है तो अगले बार फोन आप नहीं दीजिए, वहां इंटरेस्टेड नहीं लोग है भाई इस प्रोडक्ट के लिए, आपका पैसा बचेगा थोड़ा सा, उसको आप दूसरे जगह बढ़ाइए, है ना। तो इस तरह से एक लाइव एक्सपीरियंस अब मैंने शेयर किया कि कैसे आप कर सकते हैं, ये आप लोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग में से किसी को बहुत अच्छा टीचिंग आता है, बहुत अच्छा आप पढ़ा सकते हैं, आप 9th-10th के लिए, आप सीबीएसई के क्लासेस के लिए आप करना चाहते हैं क्लास। आज का कोविड पैंडेमिक का सिचुएशन है, आप घर घर नहीं जाना चाहते हैं, आप अपने को करना चाहते हैं, आप क्या वेबसाइट टीच स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट एडवर्टाइज करते हैं। वंस आप एडवर्टाइज करते हैं, आपके पास उस पर्टिकुलर और जहां पे आप रहते हैं उसके अगल बगल ही कीजिएगा, तो जहां पे भी है वहां पे आपको कस्टमर मिलने लगेगा घर बैठे कि हम ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाएंगे, मेरा 500 रुपीज पर मंथ चार्जेस होगा, नाउ यू बिकम टू अर्न थ्रू दिस पर्टिकुलर मेथड। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स आपके हाथ में है। और डिजिटल मार्केटिंग, ये समझ लीजिए कि 2016 में जो 40 बिलियन इंडियन रुपीस का ये कारोबार था, आज के 2020 का डेटा है, 2021 का हमको नहीं मिल पाया, 2020 का डेटा है कि ये 200 बिलियन इंडियन रुपीस का कारोबार हो चुका है। बहुत ही ज्यादा स्कोप है। और ये चेंजेस क्यों हुआ, उसके पीछे भी लॉजिक। पहले 2014 में डेटा का 1 GB का कीमत था 256 रुपया, था कि नहीं था? किसी से हॉटस्पॉट मांग लिए तो भाग जाता था कि हॉटस्पॉट मेरा सब खत्म कर देगा 1 GB, महीना भर चलाना नहीं होता था ना, कोई हॉटस्पॉट नहीं देता। जियो का पदार्पण हुआ 2016 और जियो जैसा ही आया, आपका डेटा का रेट बहुत ही चीप हो गया। सभी कंपनी को डेटा का रेट को रिवाइज करके चीपेस्ट से चीप करना पड़ा। आज के डेट में आपके पास एटलीस्ट बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें कि आप डेटा खूब आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। एंड इंडिया इज वन ऑफ द चीपेस्ट डेटा सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द चीपेस्ट स्मार्टफोन प्रोवाइडर, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया, सेकंड जो है सेकंड रैंक में आता है कि सबसे स्मार्टफोन चीपेस्ट, 5000 में सभी फीचर्स के साथ, उसमें यूट्यूब भी है, उसमें फेसबुक भी है, 5000 इसमें कि ये सब चीज कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, इसको बहुत ज्यादा है डिजिटल मार्केटिंग में, डायरेक्टली रिलेट करता है ग्रीन मार्केटिंग। बहुत ज्यादा टूल्स ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप खुद का अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, कैमरा लगा के अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि 5 बार 6 बार में आपको अपना खुद का अच्छा नहीं लगेगा, बट 10 के बाद हाँ कंटेंट होना चाहिए, अनाप शनाप नहीं, कंटेंट होना चाहिए कि आपके पास एक कम्युनिकेशन पावर होना चाहिए कि आप कैसे लोगों को बांध सकते हैं, कैसे समा को बांध सकते हैं, ये पावर होना चाहिए, टेक्निक होना चाहिए। एंड इट डेवलप्स, आप जैसे जैसे कीजिएगा और डेवलप हो। आप ट्राई कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन को लगा के, यू रिकॉर्ड सम वीडियो रिलेटेड टू योर ओन करिकुलम, रिलेटेड टू सम एनी अदर
10 बार कीजिएगा, आपको 11 बार में आपको खुद अपना आपका वीडियो अच्छा लगने लगेगा। और जब एक बार हो जाता है तो फिर फर्स्ट टाइम ही आपको दिक्कत होती है, नेक्स्ट टाइम से आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट कंक्लूजन हो चुका है। नेक्स्ट विषय कि आप जो भी मैंने कहा बहुत आसान शब्दों में कहा, ट्राई किया कि आपको समझाएं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और आशा करते हैं कि ये बहुत ही आपको Thank you, sir, for sharing your knowledge on digital marketing. Kumar, sir, to come up on the stage and tell us a few things about green marketing being used in his organization. Sir, in various FMCG and FMCD industries across Bihar, Jharkhand and UP. Presently, sir is with Eureka Foams. So we would definitely like to know the green marketing initiatives being done across in the Eureka Foams company. Sir, please. Good afternoon. First of all, a big thanks to the management team here in ISM for giving me this opportunity to interact, and special thanks to the faculty members. In 2004. So when I see you people here sitting in this auditorium, I remember my days of MBA way back to full batch. And it really interacting with students in this forum is a great privilege for me, and I like to at times whenever I get opportunity, I like to interact with the students wherever and whenever given. To start with, what my flow of presentation, no, not presentation, it is just an interaction. I don't tell that I'm going to present something. It is just an interaction of what I have been doing since last 16, 17 years, and what I expect, and what is the crux of this professional career that needs to be shared with you. This is what I feel that I will be doing. So I'll be starting with the company profile where I am working, and what this green marketing is. Then I'll be coming to this what green marketing is, and the third will be how the companies are trying to cope up with this challenge of green marketing. Eureka Foods is an Indian multinational company established in 1982, based out of Mumbai. It was started by the Tata Group. Later on, it is owned by Sapurji Palanji Group. You must be knowing very big name in real estate. And mostly it is known as in Indian market. We are known for water purifiers. We started with water purifiers. Then we are into air purifiers as well. We are into vacuum cleaners. We have recently come into this segment of air conditioners as well. We don't call air conditioner in our product. We call it health conditioners. Since again this is an implementation of green marketing, we have embedded this air purifier with the air conditioner, and this is called health conditioner. There are pros and cons of this, but it is a better product than air conditioner, we can say, and it is doing well in south of the South India. You will find this product is doing really well. It is well accepted. We have launched this product in East retailers here in Bihar, Jharkhand, and Odisha as well. So this is the product profile that we have, and most popular brand name we have is AquaGuard, and then AquaSure. AquaGuard is a premium. It is a bit premium, not very costly, but it is a premium segment. Whereas AquaSure is a brand which is for mass segment. So we are trying to serve both this premium as well as the mass segment that
those who are using, those who are concerned about the good water quality and better hygiene for their family and themselves. If we start if we think of history of drinking water, it starts with people started drinking water from pond or well. Then it shifted to hand pump, which was if you talk to your grandparents, they will say they prefer to drink water from pond, not from the hand pumps, because of some leather component in that. Then it was shifted to potable waters inside your home. Then it shifted to water purifier. डब्बा वाला water purifier आता था जिसमें it used to take around 4 to 5 hours for purification of 2 liters of water. You must have seen अगर आप किसी के घर में पुराना पड़ा हो तो देख सकते हो. Then it shifted to this electrical water purifiers, which was introduced by AquaGuard. So first electrical water purifier was introduced by this company only. And थोड़ा सा टेक्निकल, क्योंकि आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, सो थोड़ा सा आपको टेक्निकल बताना चाहूँगा. वाटर प्यूरिफायर बेसिकली अगर आप जाते होंगे परचेज करने के लिए तो 2-3 कैटेगरीज में डिफाइन होती हैं. एक पहला यूवी, उसको आपको आरओ बताएंगे कि आरओ आप ले सकते हो, यूवी ले सकते हो. आरओ, यूवी एंड यूएफ, दीज आर द 3 थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज टॉक अबाउट. उसमें आरओ क्या है आप लोग जानते होंगे. तो पहला वाटर प्यूरिफायर जो आया था, दिस यूवी केम इनटू एग्जिस्टेंस. यूवी क्या था? यूवी इज अ प्रोसेस इन which we pass the drinking water through UV tube. UV tube से पास होता है और UV ultraviolet rays से we kill or those viruses or which are the harmful components of the water. वो उसको न्यूट्रलाइज करता है. It doesn't kill them. ये उसको न्यूट्रलाइज करता है. तो फिर उसको बट इसका एक डिमेरिट क्या है कि इट इज नॉट पोर्टेबल. आप उसको आफ्टर एवरी 4 or 5 hours यूवी वाटर इज. नेक्स्ट आया कि दिस आरओ थिंग. आरओ इज व्हाट? रिवर्स ऑस्मोसिस, wherein this water is treated with a very high pressure to deionize the water and demineralize the water. अगर आप डॉक्टर सेक्रेटरी से बात करेंगे तो बहुत लोग आपको बताएंगे कि आरओ वाटर एट टाइम्स इज नॉट गुड. ये मानना है लोगों का. ये इसलिए कहते हैं कि उसमें इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच वी आयोनाइज करते हैं, दैट इज फाइन, बट डीमिनरलाइजेशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय डॉक्टर्स. और पुराने लोग कहते हैं कि इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, मिनरल्स आर गुड फॉर योर हेल्थ. और अभी क्या है कि आरओ पानी पीने के बाद लोगों में ये टेंडेंसी है कि वी डोंट लाइक हार्ड वाटर. हार्ड वाटर मतलब अभी हमको आरओ पीने के का पानी जो होता है ये बड़ा सॉफ्ट होता है. और एक उसका आपको जब आपके पास आरओ का मैकेनिक आता हो तो आपसे टीडीएस की बात करता है. टीडीएस मीटर डालता है, आपका टीडीएस 500 है सर, इसको 200 कर देते हैं. तो द लेस द टीडीएस द मोर सॉफ्ट द वाटर, द मोर स्वीट द वाटर विल बी. बट what the process of making it more sweet or soft, what we do कि हम उसका जितना मिनरल्स कंपोनेंट्स है उसको हटाते हैं, कम कर देते हैं. सो ठीक है, हमारे एज अ कंपनी वी आर डूइंग इट एंड वी आर अर्निंग गुड मार्जिन्स फ्रॉम दिस. सो बट ये सारे सिंस वी आर स्पीकिंग ऑन बीइंग मार्केटिंग, सो दीज आर अ बिट ऑफ थिंग्स दैट कंसर्न्स अस एज वेल. इसको हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू वर्क अपॉन इट कि ये आरओ का जो मिनरल है उसको कैसे कम कर सकते, मतलब कम हुआ तो ये इट इज नॉट दैट गुड फॉर हेल्थ. इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, इसका जो सेल्फ लाइफ है, या अगर कोई इसको यूवी वाटर है हमारा, इसको 4 घंटे के बाद भी ये पीने के लायक रहे, इसको ये कैसे कर सकते हैं. सो हमारे R&D जो टीम है दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. सो मिनरल एनहांसर इन आवर प्रोडक्ट, अगर आप एक्वागार्ड का जो डब्बा होता है ना उस पर देखेंगे तो रिफाइंड आरओ, यूवी, यूएफ, मिनरल एनहांसर. क्योंकि हम आरओ का मिनरल्स को कम कर रहे थे, सो वी अगेन एडेड अ फ्यू मिनरल्स व्हिच इज गुड फॉर योर हेल्थ. सो दैट इज द वे वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद दिस मिनरल थिंग दैट the previous speakers have emerging word.
the concept of pollution-free activity is given more importance in all sectors and all stages. And that is what we all are doing. All the companies, everyone, you cannot, जो unregistered है और जिनका product जो बहुत niche market को serve कर रहे हैं, उनको छोड़ दें तो every company is concerned about it and they are bound to be concerned. As our government regulations are, you cannot go away with doing any harm to the environment, doing any harm to the customer in any way. Is eating organic or going green is the new fashion that everyone knows. The great example I like to quote is Patanjali. We all the company having a turnover of 4,350 crores now. It is all about the not directly green marketing, but it is what they promoted. It is the organic thing that they promoted. It is the one thing was the nationalism. They promoted it. ये हमारा Indian product है. Plus natural thing. उनका जो main USP of Patanjali products are Indian as well as natural. क्योंकि वो जब भी उनका कोई ad आप देखेंगे तो पीछे background 16 years that big. अगर आप Colgate Palmolive को भी देखें तो उनका 2021 का जो turnover Indian turnover था that was around 4,850 crores, which is and that company is 200 plus years old. India में शायद वो 150 साल पहले आए होंगे, 100 साल पहले आए होंगे. But Colgate Palmolive अगर company देखें तो 216 साल पुरानी company. They are doing Indian business of 4,850 crores, and this company just 16 years or 15 years old, 16 years old company. They are doing business of more than 3,500 crores. So this is the opportunity that we have in this Indian market, Indian context. So if you want to grow in this Indian market, the customers are aware of organic things, natural things. So huge opportunity is there if you see for this kind of marketing. And in India, particularly where we have our population is so huge, and if this market is that big that even not Indian companies, the outside companies are targeting this market. So we here, whosoever is here working in this market, they have huge opportunity to work. So no doubt that companies are adopting it and concludes that green marketing is something that will continuously grow in both practice and demand. This is the well-established thought, and it will remain there. You know that there's been not in India only, across world, that this environmentalists are targeting industrial sector as a major contributor for depleting natural resources and environmental destruction. Hence, both production and marketing division of industries are stressed more to take utmost care in these areas, and that is what we are doing as well. I'd like to tell you a few things more about our RO industry. Are people aware that 1 liter of RO, आपका जो water purifier है, अगर आप उसे 1 liter RO लेते हैं, तो it wastes around 3 liter of water. So out of every 4 liter of water, you are getting just 1 liter of RO water. So the remaining 3 liter of water goes into waste unless you are not reusing it. So that is of this water, drinkable water. उनके पास पीने का सही सोर्स का पानी नहीं है. वहाँ पे हम अगर if you are using RO water, 75% of water gets wasted. That is a concern that every RO company is facing, not we only. And everyone is trying to work on it. अगर आप लोग Kent के नाम सुना है, Kent water purifier. They started capitalizing on this. ये water waste होता है, सब लोग जानते हैं. So what they did, they find an opportunity in this as well. उन्होंने अपना advertisement शुरू किया कि zero wastage RO. They started zero wastage RO. This was nothing. आपके पास जो water का wastage निकल रहा है, you can also reuse it. That water which is that goes 3 liter water which is waste, it can be used for bathing. It can be used for washing clothes. So
apart from cleaning, it can be used for anything. You know, gardening. So what they did, they put additional 10 meters का एक pipe छोटा सा उसमें डाला उसके डब्बे में, which can be to store it somewhere for to use it afterwards. And उन्होंने ऐसा promote किया इसको as they have done it's a new technique where you are not wasting water. Actually you are wasting water, but this water can be reused. ये उन्होंने बताना शुरू किया. So it is not with RO, मतलब Kent only, it is with every company who is making RO waters. So this is how they are trying to promote. और ये जो advertisement वाले लोग हैं, ये मेरा मानना है कि they can create anything out of nothing. This is what I heard, and I think कि आप सब लोग इससे agree करेंगे कि they are really genius people. They can create anything out of nothing. कुछ दिन पहले भी I have started seeing one advertisement. This is in context of what I said that for this market people. अभी recently Colgate का ad आ रहा था, and it got my attention. उसमें उन्होंने कि वो एक बच्चा है, वो he is eating some fruits, not fruits, and he is saying to his friend कि Colgate makes you healthier. Colgate से आप healthy हो रहे हैं, calcium only. तो then after मतलब when I watched that advertisement, it was आप Colgate से आप brush करते हैं तो your teeth are stronger and you chew more and then you are healthy. So this is what advertisement people can do. और they got my चीज जो अदर कंपनीज के मार्केटिंग पीपल कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ की हमारी जो टीम है वो भी यही करती है. जैसे अगर हम जैसा मैंने बताया कि मिनरल एनहांसर की बात होने की, मिनरल एनहांसर इज वन टर्म दैट वी आर टारगेटिंग द मोस्ट. हम लोग इसके बारे में जहां भी अगर किसी भी फोरम पे इसकी बात ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये कर कुछ नहीं रहे. पहले पानी से मिनरल निकाला, वापस मिनरल डाल रहे हैं, लेकिन इट इज द थिंग दैट वी नीड टू टॉक टू द मार्केट कि हम जो उसका मिनरल्स का जो भी कंपोनेंट था वो पहले आरओ प्रोसेस में खत्म हो रहा है, लेकिन उसमें हम आपका जो रिक्वायर्ड मिनरल्स है दैट इज अगेन गोइंग टू बैकवर्ड एंड इट इज नाउ बेटर फॉर योर हेल्थ. सो our marketing people and we whosoever is there working for the company, we are doing this promoting this mineral enhancer thing. In a bid to regulate the use of RO purifiers, the NGT, National Green Tribunal, had directed the government to prohibit them from where TDS is below 500 mg per liter, and to sensitize the public about all these ill effects of demineralized water. Government is also doing their bit, where they are trying to demotivate people from using RO water. Or the major reason is the wastage of this water. And as a company, we are trying to move with it. We are trying to, in fact, we have come up with now we are having UV purifiers which has a storage capacity, and we say that this earlier the UV waters were for 5 hours, it can be there for 10 hours. आप इसको 10 घंटे तक यूज कर सकते हैं, and it is there. It is the kind of process जो उसमें सिंपली हमने पहले अगर हम 0.5 watt का UV rays बल्ब यूज कर रहे थे, we have increased it to 0.8. So the efficiency of UV light is more. So the disinfection of the water will remain for a better period. This is how we are trying to cope up with the government regulations that you should not use more of RO water, and this is how we are trying to cope up with it. We said that this TDS thing, TDS is the less the TDS, the more sweet the water will be. But it is harmful. It is not harmful. It is you should not drink water level which is less than 250 TDS. It should be more than 250. As a company, we may say that it should be 100 or even less, but it should be a bit more. So this is all about our company, what we are trying to do to cope up with this. One example I'll just like to, which is not relevant, which is not relevant to my company.
The opportunities that we have in green marketing, I'd like to say one. I came across a company. I met with a few people. What they are doing, they are a big company, American company working in Bihar and UP, some 12 or 15 districts of Bihar and UP. They are into producing production of electricity through solar power and distribution in the rural areas. And believe me, for this they are getting all the funds and they are supported by big international agencies, and this is because of this green marketing only. The base of this complete process what they are following is green marketing, and I'm telling you, it's millions of dollars that is being invested in this project that they are doing. So millions of dollars for just 15 districts. You can imagine how big this market is and how big this opportunity is. I think I'm done with what I have to say. Thanks a lot. Thanks a lot, sir, for sharing with us what's happening in the industry. And definitely the marketing or the advertisement people would have got a lot of kudos from you. So now I would request Shri Sabada Shankar Lal sir, co-founder Kri Adda, Mainstream Foundation Rehab Touch, to please enlighten us about green marketing initiatives. Very good afternoon. To begin with, big thanks to the management of the college and to our dignitaries over here. They've already given a good perspective of what green marketing is all about and things we are dealing. So let's come back to the point directly. The reason that we are here today for, and when I was given this call for having a conclave on this and to meet you guys, primarily the students I'm talking right now. So I was like that I have 30 minutes of a time as I was told, and what I can bring back here in this auditorium for you guys, because down the line, 2 years, 3 years, 5 years, and 10 years, and 20 years, you will be doing certain things, the seeds of which we are going to sow today, and probably we have already moved in certain stage. And I would like to take and discuss all these aspects. So, as we are told, I suppose that there are a market. There is a mix. Okay, fine, great. So, many of you will be obviously, as today's topic is also related to marketing, and I'm primarily a marketer. It has been that for the last whatever number of years I have practiced in a professional life. So, insight is a word which I typically inserted in this column, and the reason is that जब हम as a marketer आगे निकलते हैं काम करने के लिए बाजार जाते हैं, तो we have to be a watchful lot. As Sir was saying right now that advertising people are the people who can create anything out of everything and whatever. So the keen observation that we should be having is what is going to differentiate us जब आप अपने क्लासरूम से निकल करके बाजार में जाते हो और अपना काम शुरू करते हो. That could be a job, that could be a business, that could be some entrepreneurship. लेकिन अगर वो insights एक marketer के पास नहीं होता है, अगर हम अपने surrounding से sensitive नहीं होते, then we will probably not scale जितना हमें ऊपर जाना चाहिए. We can remain as a mediocre guy. And if that sensitivity is there to understand and show the word as to how and what we can create a project, I think that will differentiate all of you in the times to come. So next slide. I will start it from this point that the pandemic that we all saw, maybe Corona, everything was all around. Then we are talking about the key changes that keeps happening all around the globe, and we are attuned to this. The US-Russia war, the Ukraine-Russia war, which is going across. So these are the important events which are happening all around, across everywhere. दुनिया इसको किस नजर से देख रही है? ये एक aspect. Each one of you, how can we be sensitive, और हम इसको किस नजर से देखें? That will develop my individual personality. मेरा take home उसमें क्या होगा? And how I can
use it for my purpose in a positive sense. So there are many events which keep on happening. A marketer's job is to have a very keen eye and on every instant. A watchful eye is what keeps us ahead and allows us for better decisions. Next, please. There are some 3 pictures which I put in over here. And while I'll be concluding my discussion, I'll bring back these 3 pictures. So just to ask somebody over here, in the first picture, the number 1, the second is the tree. The third is look like the hot whatever. Yes, from the second third, anybody can tell what is this first picture? Sorry? Yeah, please. The picture 1. What is that? Sorry? Mat. Okay. So remember your answer. Next slide. Next slide. So go, Corona, go, and please, for God's sake, you all shouted in a big way. That go. But what it left us for? हमने इस कोरोना को किस तरीके से देखा? So today, probably in this room, we will move beyond the textbook and try to understand, because this is a great academic institution, and I'm absolutely sure जो academic inputs आपको यहाँ पे दी जा रही है as a premier institute of Bihar, that is unmatched. So I will try to take the discussion a little beyond and forward out of the book. कि जब globally कोई event होता है, चाहे वो हमारे बगल में हो या कहीं बाहर हो, हमारी नजर किस तरीके से उसको कैप्चर करनी चाहिए? How do we create an insight out of that? Insight. Next, please. Next, please. So, how was the impact? It shook the whole world, the entire mankind. The pandemic changed the entire course. Human away from human. That is what we all captured. Families away from families. Doubts over faith. Fear over courage. Uncertainty over future. Selfishness for survival over the closest relations. I'm not being pessimist, but outlaying a reality जो हम सबके साथ हुआ. Just remember last 2 years how we came out of that. Now, as we are sitting in a forum of marketing, look at the other side of this. Consumers got concerned, unemployment and economic uncertainty. Interactions got virtual, economize, which is cut back spends. अपने खर्चे को हम सब लोगों ने काटने शुरू कर दिए. Contactless payments, less enthusiasm for in-house in-store visits, workplace shifting to the home, focus on self-improvement, purpose and social good are more important than ever, changing attitude to privacy, and many. So, जब इस तरह का कोई event आता है, what I'm just trying to bring in this classroom, I'll use the word classroom over here. जब कोई event हमारे पास होता है, we should be sensitive to capture this information, this set of inputs on a piece of paper, because जब हम एक marketer के तौर पे इस observation को देखते हैं, तो यहाँ से हमारा take out निकलता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए. It is not just about having a business opportunity, it is also about कि हम अपने around अपने surrounding को किस नजर से देखें. Next slide. So, just a very recent comparison. Look at a shift in the consumer behavior. Video streaming. E-commerce is accelerating. Digital videos are on the rise. Short form content, TikTok and all those, very short form of content on the rise. More helpful, relevant shopping experience. Open-minded, collectively conscious consumers. Value-driven spending decisions. Empathetic creatives leading more in-home experience. The change is good and okay and convenient as it is. No more craving of, I want it like this. The consumer arrogance is somehow subdued. पहले arrogance होता था, मुझे ये चीज़ ऐसे ही चाहिए, मैं वहाँ जाके दूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये. I think Corona, what it did to us, कि हम थोड़े से अच्छे हो गए. So a shift in consumer behavior. Next. Now look at a shift in the consumer emotions. How the consumer emotion changed. This was a percentage of people who say that these groups should get more financial support than they received before the pandemic. अगर 100 लोगों का सर्वे किया गया तो 70% लोगों ने कहा कि जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनको थोड़ा और पैसा मिलना चाहिए. क्या पहले ऐसा बोलते थे? लो पेड जो वर्कर होते हैं 62% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, कम पैसे वाले लोग हैं उनको थोड़ा ज्यादा पैसा मिले. So we started to become little empathetic because 2020 के पहले कोरोना नहीं था. Corona did something over here in all our brain and we started thinking differently. Social care 15%, homeless 53%, and small 50%. So suddenly the human being, you all started to become good.
कि अगर वो जोमेटो वाला है तो उसको 10 रुपया दे दो, चलो ये ऐसा कर रहा है उसको हम 25 रुपया दे देते हैं, मेरे काम वाली आती है वो नहीं आ रही है, अच्छा उसको पहले पैसा काटते थे, अभी यार उसके घर में दिक्कत होगा, चलो इसको फ्री में हम 15 दिन का पैसा दे देते हैं, नहीं आ सकती। सो सडनली वी स्टार्ट टू बिकम रिटर्न। नेक्स्ट, look at a shift in a consumer daily routine. So behavior, emotion, and now the daily routine. Everybody is saying after this pandemic is over and we get out of this completely. So 42% of people say कि अब हम जी ज़्यादा थोड़ा पैदल चलेंगे. Work from home, 32% से कि अब prefer करते हैं घर से ही अपन काम कर लेंगे. 32% लोगों ने respond किया कि हम फैमिली से ज़्यादा बात करना चाहते हैं. We want to talk to our parents, brothers, sisters, साथ बैठे हैं मिले. Shopping local. पहले जो पैसे वाले होते हैं उनको शॉपिंग करना होता तो वो दुबई भी चले जाते थे, कोई दिल्ली भी चला जाता था, कोई लोकल मार्केट में मॉल पे चला जाता था। अभी ये कि बगल के गली से अगल बगल से सामान खरीद के अपना काम चल जाएगा। देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन दैट बिहेवियर आल्सो। 28% रिस्पोंडेंट से क्या है मुझे साइकिलिंग करनी है। सो व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज शाउटिंग अबाउट कोरोना फियर एज अ marketeer, when you get out of this classroom and get into your workspace, जब आप बाजार में निकलोगे काम करने के लिए, आपका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होना चाहिए देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज यू शुड स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड how you are going to act and perform. And this goes to adapt, not by choice. Next. So in a nutshell, what it was, marketing begins with knowing your customer. पहले क्या होता था कि अपने कस्टमर को जानो. Now it is little different. Please know your customer segment. I am sure you understand the difference between customer and customer segment. So पहले होता था, who's your customer, sir? ये ladies group is a customer for X product. No, it is not anymore. Within that ladies group, what is my segment? This is the profile, this is the age, this is the bracket, this is the like, this is the dislike. So I focus my product over there. So पहले हमें customer का एक base चाहिए होता था, अब हम customer का segment that is becoming important. पहले कहते थे कि who is my competitor? So Mr. X will say that, why is the competitor? No, that thing has changed. My competition today is the last best experience your customer had. उसका वो जो last experience है वो कितना बढ़िया था, that is my competition. It is not about the holistic competitor, this versus this. अगर उसका last experience इसके साथ बढ़िया था, he will be loyal to that person. If this is giving something a better experience, the loyalty shifts. So we have to know that who is my customer. Customers hope you have what they want. Now the customers expect you to exactly have what you want. अब वो उम्मीद नहीं है, अब बिल्कुल ये मेरे को ये चाहिए. So the companies have started thinking differently. Tomorrow you all will need certain products. You all will sell certain products. You all will market certain products. So please, let us. And now when we are speaking today, this is 2022. Believe me, when you are in the market, probably in 2024, 25, this will be a change definition. This will no more be relevant what we are discussing today. In 3 years' time, this is gone. Quoting customer was just like dating. Today it's like online dating. I hope this difference is very obvious and clear too. Your brand should stand behind great products. बहुत अच्छा product होना चाहिए. But today we are speaking, your brand should also carry great value. And that is the crux of even our discussion today. While quality, convenience, and price still very much matter to the consumer choice, factors like sustainability, trust, ethical sourcing, social responsibility are important to how consumers select their product and services. So that sensitivity part is creeping inside all of us. Next. This is just a graph to show you. This is our Ernst and Young's recent survey, which is taken in 20 countries across 15,000 individuals somewhere. So now health has taken a priority in terms of, since the start of the pandemic, 5 different quadrants of consumers have shown health first, planet first, society first, and the experience first. Next. Larger view. All of this. Now let us look at how the shift in the industry is going to take in the next 3 years. What is going to happen by 2025 and healthcare. Telehealth doctor visit replaces the traditional annual physical by 2025. This is projected to happen. Real estate. All new construction of multi-family homes beginning in 2021 will include a co-working space.
अभी तक जब हम 3 BHK घर खरीदने जाते थे तो हमें 3 कमरा, एक किचन, एक वॉशरूम, एक बाथरूम ये चाहिए होता था. Now the builders, when now they are proposing a project, अब हर एक घर के अंदर में एक co-working space, एक छोटा सा केबिन जहाँ बैठ के हम नौकरी कर सकते हैं. That has become a part of our real estate. So again, coming back to the same point, we can know that what is real estate. We can understand how and what, but what is going to happen after 3 years is what you have to prepare when you leave this campus out. Manufacturing, full adoption of supply chain, which is not as of now, and it is projected to happen by 2025, the entire process. Financial services, already there are a lot of changes which we have seen and is happening. Integration of tokenization technology, better secure and track individual purchase and transaction by 2023, which is very recent, because अब हमारा spending pattern completely shift कर चुका है by and large. I'm not saying 100%, but to a very great extent. Retail e-commerce sales account for more than a third of total retail spending by end of 2021, and to be further up by 45% by 2024. So guys, when you are sitting in this classroom and taking all your academics input, and a day will come when you exit this college, please remember that the world outside is completely different, beyond your textbook. So good to have all the great knowledges, but unless and until we develop a mindset to create insight, whether you are a marketeer or you are going to be an accounts professional, you are going to be a sales professional, we have to think 3 years, 5 years, 10 years down the line as to where the world is moving and how do we take us there. Next. Gartner, this is a great marketing authority. This is their proposal. You know, respond, recover, and renew. So the circle which I have put in over there, immediate action required to keep people safe and essential business function operating. So what I'm discussing today here is just an example of one event which comes across over here. How we should start looking at it, how we should get ready for it, what should be our response in the time to come, and where is the opportunity inside it. All of us has to be ready for this. So the number one is the response. Second is your restart your activity, reopen, rehire, rebudget, resupply, create a plan to restore scalable states, strategic, durable execution across the organization, and the most important one, use learning and emerging pattern from prior phases as element of new foundation. So 2025 और 26 में हम लोग जो करेंगे, अगर उसके लिए हम आज अपने insights को नहीं develop करें, then we are not going to be as successful as we want. Next. This is the consideration, a very important slide which I just like to put out here. So this is the normal flowchart जो आप पहला देख रहे हो. जब एक company, any company in this world, what is the consideration? How do we begin? Number one, when a company is formed, कोई भी कंपनी बनती है, उसका पहला consideration होता है there is an economic responsibility. मैंने कंपनी बनी, मुझे तो profit चाहिए. Then only we make any plan. Then there are legal responsibilities because again, suppose if I am opening a new company in Bihar, I have to do my legal responsibilities. Ethical responsibility, then we start thinking about ethical responsibility. Then we go to the philanthropic responsibility. अगर हम उस level तक पहुंच पाए तो. Now the question is, this is the proposed model. My number one would be an ethical dimension. Number two consideration would be the legal. Number three will be the economic dimension, and number four will be the philanthropic dimension. What prevents us? Today we are discussing a lot of things about green marketing, how, what, and where. But let us little deep dive into it. और थोड़ा सा मैं अपने conversation को naturally यहाँ से digress करूँगा, because I wanted to leave a thought process with all of you. Next slide. Next. Just click. Yeah. Next. Can you click it 4 times? More here. Yeah. More please. Click more. More please. Yeah, please stop. So let's completely digress. अभी जो हम लोग discuss कर रहे हैं. And this is a very usual course of our group. We all were like this from stage 1 to stage 6. Stage 1, I spend maximum time in my family, in my society. I learn my values out there. Whatever I was taught about with my parents, with my relations.
Then there is a major portion of our life when we get into the class 18. I was 4 years old. I went to the play school, the school, the 10 plus 2 plus 3 plus 2 years of education, and that is how it went. Then some of us got into an MBA, some of us got into an IIM, IIT, the MBBS, BTech, MTech, we take our education. And then we got into some kind of a professional job, a business, entrepreneur, a freelancer, or whatever. So this is a normal course of a human journey that we all are going through and we all go through. Next please. All through our life, and I'm not raising any question on anybody, but again, this is something which I made as an observation, and I'm just trying to share this with you. All through my life, all through my career, I was always told that I'm the best because I came first in school. जब घर के मेरे बगल के पड़ोस आते थे, तो अगर मैं बहुत अच्छा नंबर करता था, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हो गया जी। आज हमारे सबके घर में यही होता है। The first in my classroom is the best. That is what we have been taught since our childhood. Whether it is school, college, or in some professional organization, जो सबसे अच्छा revenue करके लाता है, he is told as the #1 performer in a professional organization. Good, no problem. Let us look at the third year. Best in academic is the best overall. No ranks, no markers for ethics, values, sensitivity to environment. We do projects in school with no linking to class centers. I am a graduate with no rating for value systems. Our promotion at workplace is never linked to value display, but by financial targets. It's a hard fact, it's a hard reality, but the fact is that we are living this. Next. Next. So this entire chain of evolution of a human to a future professional, right? We do not sensitize the child with the hazards that we will create consciously, unconsciously in future as adult professional in respective field. So today, by the way, you are sitting in an MBA class. There would be a class where some doctors will be being created, engineers, technocrats, so many people, all different domains. But have you ever found so diligently the thing that we are today discussing about green marketing, ecological imbalance, environmental hazards? Where was it built into our entire educational system? It was not as practical. Yes, I'm not saying it is not, but कितने मजबूती से उसको डाला गया so that it enters over here. Why I'm saying you this? Because coincidentally it happens that, as sir was saying, I'm just mentioning it for a reason. I'm not here to advertise anything. But we work with, one of my organization is working with autistic childs. Autism, I hope you all understand. No. तारे ज़मीन पे देखा था? So that child, Darshini Sharpal, what was his name? So he was an autistic child. We call it a special child. So in a calendar year, we go across at least nothing less than more than 1,000 child who are a special child, and we work very closely with them. And we have a clinical psychologist team which works with these child for many subjects. Believe me, the first 3 stages that you see, the stage 1, 2, and 3, is the foundation. And I'll just give you a very good example over here. Okay, this is the best way for me to give you an example now. So, this is how we are born. Just like very clean water. The baby at your home, at my home, we are just like this. We are born like this. No inputs. It's like a hardware. It's like a hardware, I repeat. What software will put inside is what is going to remain with him for the rest of his life. So what we feed inside the child in terms of our value system for the first 1, 2, and 3 stages is going to remain with him for the next 100 years in his life. It is not going to be that today somebody tells me that green marketing is a great initiative, go and do something for green. I will go and say, yes, I will do, but when my own economic consideration comes, I will put it on side, I will move ahead and do my things which I have been taught in the stage 1, 2, and 3 of life. Next please. Just 3 more clicks, 3, 4 more clicks. More, please. Just more. Just click and complete the slide. Yeah. More. So suppose I have been given a task. Now look at our reaction as a professional. हम क्या करते हैं? In day out. So I'm from a sales team, and suppose I have been given a task.
to create a product campaign which takes my sales up by 15%, 15% की sales बढ़ा देगा. आप ऐसा campaign तैयार करो. What I will do? We need insight. हमें उसके लिए कुछ insight चाहिए, कुछ information चाहिए. We'll creative enough. We'll create some campaign. From where I will draw that? I will draw that how here we are trained to react to what we have learned previously as a result of our educational learning and awareness of surroundings. मुझे क्लास में स्कूल में जो पढ़ाया गया था मेरे पास वो नॉलेज है. मुझे MBA के क्लासेस में जो बताया गया था मेरे पास वो नॉलेज है. मैंने अपने अगल बगल से देखा एंड God forbid today we have Facebook and WhatsApp to learn the entire knowledge industry. So, what we will do here is the result of what values and not only education we are installed in the family, school and college. So today, whether you are a brand manager tomorrow, whether you are a doctor, engineer or whoever in your life, unless and until that value system is installed within us, starting from the age of 4, because that's the time when child responds, till the age of 12 to 14, we are finished with our child. Please take my these words. These are clinically proven data available in the medical field. Let us not think that at the age of 25, I'll try to give a 20 minutes lecture and this entire lot will change. So the responsibility lies with us. We can question the government, we can question every authority over here, we can question the corporates, but please first let us question ourselves. कि जब मैं अपने बच्चे को घर में ब्रश करने के लिए बोलता हूँ, so that is an inbuilt part in his habit. मुझे उसको रोज नहीं बोलना पड़ता है कि ब्रश करो. मुझे क्यों बोलना पड़ता है कि पेट बचाओ? Because we have not taught him that. पूजा रूम में जा रहे हो तो जूता चप्पल खोल के जाओ, because we have built that one value system. उसको वो यहाँ है, जब उसको कमरे में घुसेगा तो चप्पल खोल के ही अंदर जाता है. पेट की टहनी तोड़ने से वो ये नहीं सोचता है कि इससे क्या होगा, वो ऐसे तोड़ता है, ऐसे ऐसे करता है, पत्ता नोच के देगा, आगे बढ़ जाता है. We have never taught them that what is the hazard. So tomorrow you may become anybody in your profession, but unless and until that value lies within you over here, will not be able to achieve our goals. Next. Next. Yeah, just hold it. Sir, this is the Constitution of India. This is not a map. This is an eye-opener for us. This is the cover page of the Constitution of India. Now tell me, why we did not recognize it? हमने क्यों इसको नहीं पहचाना? Because हमें किसी ने बताया नहीं कि this is our Constitution. We all say today that there is the generation has a problem. कहीं पे कोई कानून तोड़ रहा है, कहीं पे कोई ये कर रहा है. I have a daughter and morning prayer she says online because I could hear. जब तक सपना पूरा ना हो हम नहीं करेंगे हमारा. Great. What is that सपना? Nobody tells. The पहला सपना should be, please remember, it starts at the age of 4. What we feed them actually is the full self. Next please. At the age of 4, before a school prayer in assembly, introduce the oath. I am an Indian. I live by the Constitution of India. Expose the child with the Constitution of India along with your Gita, Quran, Bible, Guru Granth and Sahib. That is how we are going to create a good citizen for tomorrow after 25 years when he is a brand manager, a doctor, engineer or whoever in the society. If we expect that all of a sudden 25 years, at the age of 25 years, वो बच्चा एक अच्छा citizen बन जाएगा, sorry, we have missed the time and the opportunity. We don't know. We have never exposed them. वो बच्चा पढ़ नहीं सकता है Constitution को, बट हाथ में रख सकता है, and you will know from his visual acceptance. बचपन से एक किताब उसके हाथ में देख उसको याद कराया गया है कि this is the Constitution of India, this is my country, I have to respect. That will be built inside his character, and that is what we should strive to sow the seeds at the very elementary level. Next, please. Please, next. To be promoted to the next class, if I plan 5 plans, 8 plans, 5 days every year. अगर मेरे बच्चे को क्लास 4 में इसलिए फेल कर दिया गया क्योंकि उसने 5 पौधे नहीं लगाए थे साल में, तो ये उसके जहन में, उसके खून में बस जाएगा कि मुझे हर साल 5 पौधे लगाने हैं. वो अपने बढ़ते हुए उम्र में उन 5 पौधों को देखेगी. उसको पता होगा कि ये ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है. जब वो कोई टहनी तोड़ करके बर्बाद करेगा पेड़ को, तो उसको समझ में आएगा कि एक पेड़ तोड़ने का मतलब क्या होता है. क्योंकि इन हिज लाइफ और हिज लाइफ दे हैव प्लांटेड 100 trees, maybe or 200 trees. बट हम अपने बच्चे को सिर्फ एजुकेशन में हाई ग्रेड्स 98% ला करके we think that we are giving and doing the best for him. Academic is not the end of our life. There is a value system that we have to build inside that child beyond education. I think that's very important. The third one, please. Next. Sir, हर स्कूल कॉलेज के बाहर एक टैब लगा दो
और एक घड़ा रख दो, स्कूल कॉलेज का हर एक बच्चा एक बोतल पानी उठा सकता है, उसको उस घड़े में जाके एक बोतल पानी डालने के लिए बोलो, और let it be open for the general public. That child will understand what is the importance of water. हम अपने बच्चे को नल का पानी बंद करने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब मेरे घर में भी ये होता है, आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल, हम अपने बच्चे को नहा करके हाइजीनिक तो बना देते हैं, कितना पानी में नहाते हैं ये कभी नहीं चेक करते हैं। तो वो ताजा बच्चा होकर जब वॉशरूम से बाहर आता है, वेरी हैप्पी दैट आई एम क्रिएटिंग अ वेरी गुड लुकिंग नीट चाइल्ड। कितने पानी में नहा लेना चाहिए? 1 बाल्टी इज एनफ और 10 बाल्टी इज एनफ? If I am rich, spend 30 liters, which could be done in 5 liters probably or 20 liters or whatever that number be. तो पानी का इंपॉर्टेंस समझाना है, ट्री का इंपॉर्टेंस समझाना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस समझाना है, एंड देयर आर मेनी सच थिंग्स बियॉन्ड एजुकेशन. If we have to create that, the time starts at the next. Coronavirus was and is just one of them. How many demos we have created? Do we really know what future we have living for the next generation? Each fraternity, social, political, scientific, educational, corporate, art and science, legal and whatnot, has to reboot, take a pause, and create the value system beyond education. With insights and giving this world the excitement of experiencing new products. Yes, we must achieve the perfect mix of corporate expectation, consumer need, offerings, automation and communication, yet being sensitive to our ecosystem. What we leave behind the next gen that ensures a better, responsible and sustainable future. Next. Move with confidence, minus attitude, stay hungry for being better than today, challenge the convention and go beyond the others. Thank you. Thank you, sir, for showing us the importance of insects in our life. Now I would request Ms. Shaumya Shukla ma'am to share the vote of thanks. I, Soumya Shukla, co-coordinator of the Marketing Conclave 2022, would like to take this opportunity to thank our Honorable Chairman of ISM Patna and Mundeshwari Group, Sri Samrendra Singh sir, for his blessing on the auspicious occasion of Marketing Conclave 2022. I am thankful and grateful to our visionary Vice Chairman sir, Sri Deval Singh sir, and Executive Secretary Sri Amal Singh sir for his continuous support and encouragement to perform Marketing Conclave 2022. I, on behalf of ISM Patna, wish to express my gratitude to the entire eminent speakers of different domains for enlightening us with wisdom of knowledge on Marketing Conclave 2022. Thank you very much, sir, all of you, for sharing your valuable time with us. I, on behalf of entire ISM family, would like to thank Sri Shailendra Singh sir, a dynamic personality of academics and corporate. I would like to thank Dr. Amarnath Pandey sir for gracing the occasion of Marketing Conclave 2022 at ISM campus. It is my proud privilege to welcome Sri Mohit Kumar sir for accepting our invitation and sharing his valuable time with us today. I feel very honored to thank Sri Sharbada Shankar Lal sir, a young dynamic person, to gracing the occasion of Marketing Conclave 2022. I extend my heartfelt thanks to P.K. Agarwal sir for accepting our invitation and extending support to ISM Patna. I extend my heartfelt thanks to Ms. Prerna Gupta, Senior CI NCC, for giving her valuable time. I am expressing our profound gratitude and thanks to Honorable Director Sir, ISM Patna, Professor Dr. R.K. Singh Sir, from bottom of my heart, to provide us all necessary direction, support and encouragement for Marketing Conclave 2022. I extend my warm regard and thanks to Administrator ISM Patna, Ms. Niru Kumari Jha ma'am, for unconditional support and needful directions. I am thankful to entire members of Marketing Department, different domain leaders, faculty, colleagues, and teaching, non-teaching staff, technical support members, and my dear students to enjoy Marketing Conclave 2022 at Auditorium of ISM Patna. I extend my thanks and regards to our event co-convener and domain leader of Department of Marketing, Mr. Nayan Ranjan Sinha sir, and the moderator, Mr. Arinandam Roy sir,
support. Thank you very much for your continuous support, which made the Marketing Conclave 2022 organized by Department of Marketing ISM Patna as a grand success. Thank you all. Go green, stay happy. Thank you. I request all of you to please stand up for the national anthem. I request the students of PGTM final year to kindly please be seated and rest of us move for the lunch. We are going to assemble here after an hour. Thank you very much. attendance